programs of the ministries and manage the liquid waste management, urban governance, urban reforms, smart city PPP, disaster management, climate change, sustainable developments, and other financial modeling. He is having a master degree in urban planning from the School of Planning and Architect and geographer from the Delhi Schools of Economics. I think he is still in the lunch place, not an issue, so I will just ask somebody to just let me call now on stage Dr. Vicky Anand. Yes, please, you can come forward. So, Dr. Vicky Anand is a prominent researcher at IIT Jodhpur with a strong focus on water management and sustainabilities. His expertise encompasses various aspects of environmental science, particularly the areas of water resource management, hydrology, and the assessment of water quality. Dr. Anand has been involved in several significant research projects aimed for developing innovative solutions for water conservation and management. His work often emphasizes the importance of sustainable practices in water uses, aiming to mitigate the impacts of climate change on water resources. He has also explored the role of advanced technology and data analytics in enhancing the water management strategies. His contribution to the field included publishing numerous research papers in peer-reviewed journals where he is discussing the various methodologies of assessing water quality, optimizing water uses in agricultural, and implementing sustainable water management practices. So, welcome you, Dr. Anand. Now, our next speaker is Professor Dr. Sudeep Mitra, sir, from IIT Guwahati. Please come on a dais. Let me give you some brief details about Dr. Mitra. Dr. Sudeep Mitra is a prominent figure in IIT Guwahati, where he serves as a professor of his schools of agro and rural technology. He has an extensive experience in areas such as biofertilizer, development of soil quality management, and environmental sustainability. Dr. Mitra also founded the Center of Disaster Management and Research at IIT Guwahati and currently holds a leadership role there. His background includes working with the prestigious national and international institutes such as M.S. Swaminathan Research Foundation, TERI. Additionally, he contributed the global initiative including a project coordination by inter-academia councils aimed at improving agricultural productivity and food security in Africa. Dr. Mitra has also been recognized as a Fulbright Scholar as a research on greenhouse gases modeling in rice ecosystem at the University of California, Davis. He received the fellowship from Lead India and is elected member as the National Academy of Science in India. His work in rural technology and sustainable agriculture continues to contribute significantly in the scientific communities. So I welcome you, honored Professor. Next speaker is Dr. Polime Banerjee. Dr. Banerjee, please welcome him. My moderator, Mr. Praveen Bardwaj, is now here. So I am just introducing all our esteemed panelists. So I have already introduced two people. So let me just give you the brief profile of Dr. Banerjee. Okay. You want? Okay. Okay. पहले तो तीन लोग हाँ तीन लोग उमाशंकर पांडे जी मंच पे आ जाएं। डॉक्टर विकी आनंद आईआईटी जोधपुर से आपका यूनिसेफ को कोई रिप्रेजेंट करने आएगा?
WWF के रिप्रेजेंटेटिव जयनाथ विजय सिंह जी, जयंता देखिए, इस सेशन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं. This is a very interesting session where we are having people from 3 different arenas. If you look towards the dais, there are 2 people from academia. 2 लोग IIT से आए हुए हैं जो भारत सरकार के बहुत सारी योजनाओं में आप अब देखेंगे कि वो चाहते हैं कि IIT और ये सब चीज़ें वो रिसर्च करके नई चीज़ों पर उनको मदद करें. So we are privileged that 2 people from IIT have joined us. Then we have a person from WWF, again an organization who is helping us for quite some time in understanding that what wildlife is, how the forest conservation is taking place. So I'm privileged to have a person out here. Dr. Uma Shankar Pandey ji will join us anytime. उनका है वो ग्रासरूट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने फील्ड लेवल पर बहुत काम किया है. और एक इंटरेस्टिंग पहलू एक समझने की ज़रूरत है, वो आप ये समझें कि जब हम शहर की बात करते हैं या कहीं भी ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं तो हम एक कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन की बात करते हैं. आप या तो शहरी क्षेत्र में जाएं या आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, दोनों जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातचीत बहुत होती आ रही है. ये भी कहा जाता है कि जब तक पार्टनरशिप कॉरपोरेट जगत से नहीं आएगी तब तक ग्रोथ नहीं होगी. और CSR इनिशिएटिव आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने उसका लिया है. सो CSR इनिशिएटिव हेल्प्स अस अ लॉट इन टेकिंग द प्रोग्राम फॉरवर्ड. एट द सेम टाइम, even in the corporate sector, lot of villages and others are adopted so that they can carry on with their activities. So Dr. Palmi is representing one of the corporate organizations out here. Now let's introduce the person one by one. Now the main role of the 2 people sitting from the IIT, they have done a lot of research. They are heading some of the departments, and maybe they are going to speak out on what their contribution has been in the water conservation, water implementation, how the sustainability challenges are going to be taken into future. So I request them, if they can focus on that, maybe the people are going to be benefited out of it. When we talk about rural and urban at the same time, there is one interesting fact that we need to understand. जब हम हर घर जल की जब हम बातचीत करते हैं, तब एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं तो हम बातचीत करते हैं 135 लीटर पर पर्सन पर डे. लेकिन जब वो रूरल कॉन्टेक्स्ट में और हर घर जल की हम बात करते हैं तो वह 55 लीटर पर पर्सन पर डे. अब ये दोनों में फ़र्क क्यों है? पिछले सेशन में आपने देखा होगा, हमारे एक कलीग थे, उन्होंने बातचीत की सीवरेज के बारे में. नाउ मोस्ट ऑफ these programs are implemented in bigger cities, and for running a sewer line we need 70 to 80 liters of water. So to maintaining the sewer line, the 135 liter per person per day was adopted by CPHO, Ministry of Housing and Urban Affairs. But when you go to the rural side, it is 55 liter per person per day. लेकिन यहाँ एक बात आपको समझने की ज़रूरत होगी कि when we look at cities in India, at present there are 4,902 cities. But if you look at the other side, there are 5,000 cities still waiting. And why these 5,000 cities are waiting? Because it is a state subject. Urban is a state subject, and the notification is needed from the state side. When we say notified towns, it should have an elected representative in place. Otherwise, it is still a census town. If you look around Delhi, there are 2 big cities, which is Noida and Greater Noida, which is still a census town. They are not having an elected representative. There are towns like that. If you look around Gurgaon again, part of it is municipal city. The other half, where the private people are building their houses, it is not again in the municipal corporation. If you look beyond 650 cities, the government of India program doesn't reach there, क्योंकि सीवरेज उनके अंदर नहीं. अमृत 1 और 2 में 500 शुरू होकर 650 पर हम आज तक रुके हुए हैं. तो क्या हम सेप्टेज मैनेजमेंट और बाकी चीज़ों से जो पानी रिसाइकिल करने की बात कर रहे हैं,
क्या हमारी वो सोच होनी चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हम एक दूसरा मॉडल लें? और फीकल सेप्टेज मैनेजमेंट की हम बातचीत करें, जो वाटर रिसाइकलिंग की बातचीत हो रही है, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप हर शहर में सीवर लाइन बिछाने में पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे और अब पानी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। और फिर हमने देखा है 650 में कम से कम 500 सीवर अगर चल भी रही हैं तो आज तक बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ है। एक प्रोग्राम था कि हम थर्मल प्लांट को हम पानी देंगे, अभी तक वो टेक ऑफ नहीं कर पाया है। तो गांव में एक परेशानी जो अभी आई है उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, बाकी स्पीकर्स उसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। जब गांव में पानी आ गई तो पानी की वेस्टेज शुरू हुई। एक जगमग योजना के तहत लोगों को दिया गया था। हरियाणा में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उन्होंने ये बोला कि स्टार्ट चार्जिंग द वाटर मीटर व्हेन द वाटर मीटर वाज बीइंग चार्ज, क्योंकि बिजली बिल ज़्यादा आने लगा तो पानी की खपत कम होने लगी। मे बी many a time we look at the conservation method at the field level, but it can be a behavioral thing also. It can be taken through the IAC and other mechanism also. So now I will request Professor Dr. Sudip Mitra to please come on the stage. And because we are running out of time, maybe I will just request you if you can just keep your speech to 8 minutes so that we can give some time to the audience to ask question. In the last session also, वो हम कर नहीं पाए थे, so I will request everyone sitting there कि अगर थोड़ा सा लिमिट करें तो मैं भी क्वेश्चन तुरंत नहीं, लास्ट में we can take it and anyone can from the panel can answer. Please sir, please come. Thank you, Gordwaj ji, and thank you, Rajiv ji, and thank you, organizers, for having me here. Ms. Namrata Gandhi and her entire team for wonderful organization here. People say that we at IIT, we do one of the best international conferences, but there are so many things that I think I am learning because soon we will be having also a big conference in Guwahati. And so let me just get into the presentation slide only, then I will start doing. नहीं, ये जाना चाहिए डिप्लोमा। Duplicate pen है, and what that one. Yeah, I don't know. Duplicate pen right. We're like thinking about this. Duplicate pen too. Yeah. And you go to other Paris city. Anyway, yes. Yeah. So technical hitch. Okay. So just I will be quickly sharing some of the thoughts and then little bit on the work that we are carrying out. I'm coming from a state called Assam, where normally between July to September, October, we get huge amount of rainfall. But for some reason, this year we had the deadliest, summer, and with almost around 90 to 91% humidity and around 37 to 40 degrees centigrade temperature. My colleagues coming from Europe and USA probably were thinking that how people can survive. The feeling of 37 degree was around 54, 55. It's kind of boiling situation. So today morning, several people have talked about, but the state that I am coming from, Assam,
used to be always, flooded. We got flood also this time, and lot of discussions are going on. In fact, I am coming from another conference, Green Summit in Raipur. Some of the colleagues are here who attended the other one also. So most of us, we are actually discussing, it is probably not the scarcity of water, probably the management of water. And I had the privilege of teaching in JNU also for 6 years in the School of Environmental Science, and Professor Kundu is here. So we have been reading his writings and speeches as a faculty in JNU and also as a student of this particular subject. My training is in agriculture, and then I have been working in the field of climate smart agriculture for last 30 years. Professional life, 24, 25 years. So I will be just sharing, not because इधर में बहुत सारे लोग हैं, भाई बंधु हैं, जिनको शायद मेरा बात तभी समझ में आएगा जब मैं इसको थोड़ा सा डाउन स्केल करके डिस्कस करना चाहता हूँ. तो मैं आज जस्ट इस सेशन के आगे बहुत सारे स्लाइड मैंने रिमूव कर दिया और ज़्यादातर कोशिश किया कि पिक्चर और वर्ड में लिखा जाए. So I have removed some of the so-called modeling stuff that I wanted to show in a diagrammatic way and also in a dynamic process. But I think that when I came here, I found that probably I should change my process. So जैसे हम सबको पता है that कि climate किस तरह से हमारे water, plant and soil, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में SPAC बोलते हैं, SPAC, मतलब soil, plant, atmosphere and the continuum. तो ये चीज़ जो है पोपट साहब जी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझा के गया, करके भी दिखाया. हम लोग तो रिसर्च करते हैं, पब्लिकेशन छापते हैं अच्छे जर्नल में, कोशिश करते हैं. हमारा जो स्कूल में मैं काम करता हूँ, स्कूल ऑफ एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी, it is one of the unique ones in India that we have in 4 IITs only till now this kind of agro-rural discipline. Most of the time IIT means we work on advanced technology, but now we have this kind of center which are mandated to work with even NGOs, grassroots level organization and directly with the farmers. So that is what we have been trying. So I will not talk about this thing, but some kind of, to link what I am going to share in couple of minutes is to that this kind of situation that we are going through currently, and my state of Assam, we have experienced it very, very badly this time. Because when rice actually was being transplanted, we needed the water most. And that time there was no rain. We actually are not going to have very good situation. So we need to be prepared, and I think that little bit of relaxed attitude will force us to pay quite heavily if we are not well prepared. So कौन actually सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा? वही होता है जिसके पास पैसा कम है, पॉकेट में पैसा है, तो आप तो तुरंत अडॉप्ट कर लोगे. अभी हम लोगों को गर्मी ना लगे इसीलिए एसी लग गया, लेकिन ये एसी क्या सब जगह में लग सकता है? नहीं लग सकता है. अगर नहीं लगेगा तो गर्मी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एडाप्टेशन. सो एडाप्टेशन पावर को भी शायद और एनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वी कैनॉट अवॉइड सच काइंड ऑफ वेदर टू फेस. सो व्हाट टू डू नाउ इन दिस एस्पेक्ट कम्स आवर रोल. सो all these 3 lot of people have been working in the field of agriculture. Now we are working for last decade or so in the concept we call it climate smart agriculture, which actually includes all aspects of tools and technologies to address the climate, sustainability, adaptation, and also mitigation. So, current ICR Director General, Dr. Himanshu Pathak. Yes. So 2 minutes and 60 seconds. So he has given, in one meeting. So I just took this slide from him. He mentioned that farm, building approach, and as you see that how nicely that he has put the thought process in one slide. So to address those kind of work, we need to have different kind of approaches that our colleagues are doing at the grassroots level, but we cannot ignore the fundamental research.
So ये बोलने से नहीं होगा कि ना advanced research भी नहीं चाहिए. I think that part also need to do, and various institute we are trying to do our best to come out with some kind of technology or tools. This is a list of tools that you will see. I don't have time to explain, but most of these things actually many of the institute, IITs and ICR institutes we are working with in all the sectors of agriculture, and each one of them water is an important component. So when we talk about water, then you see the different kind of varieties that people are coming out. So these are the varieties, most of them are developed by ICR. Now coming to some of the water-based technologies which are actually already in the ground. Most of them you have seen probably, some of them are still in the incubation, some will go to the field maybe in couple of years. So we are trying all these technologies in Assam and also other northeastern state. Being IIT, we have School of Artificial Intelligence, and we have a team of faculties, professors who are very good in artificial intelligence. So we developed a team who are working on robots and robotics and artificial intelligence. I don't have time, neither this is a correct audience to get more detail into this aspect, but if you are interested, you can browse to our website. So we are working with Indian military and also working with DRDO to develop. A lot of works are going on in the advanced artificial intelligence aspect. So what is the way forward? This is perhaps something that every one of us who has understanding a little bit on policy aspect, this is the goal probably that we have to move it. And as far as the climate smart agriculture is concerned, which is my bread and butter, I think that we have to move. This is the direction that we have. It's not an easy path, and we have to work more and more people like Pandeyji and Popotraoji or Paliwalji. So this is and just an idea that many of us actually often share in different fora. So these are different paths of meeting the climate friendly development goal. So for us, I think that this is the right path. We cannot be in one shot. I think पांडा जी मॉर्निंग में बोला उन्होंने, अचानक 2 दिन में एक रिवर को पानी से भर नहीं जा सकता है. वैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री से सोच लिया और 30 साल 20 साल में डेवलप बन जाएंगे, इतना आसान नहीं है. दिस इज ए प्रोसेस एंड वी शुड फॉलो दैट पाथ. प्रोबेबली फॉर आवर कंट्री the best path is that we should move in the climate friendly directions. So low carbon, low water, low energy. This is the work that in my lab, I along with my PhD students, we are working, and different funding agencies and collaboration that we are having here. So the future technologies that we are working, this is the set of things. I don't have time, but we are moving from the left hand side to the right hand side. This is the future. The artificial intelligence and its role in water and soil and agriculture management. Very soon that we will be bringing some of the technologies on the ground. But having said that, I personally, because I worked in NGO also, I worked in Kalahandi, I worked in Narsinghpur, so I worked in Popotraoji 20 years back. So I understand the ground reality. Now, after JNU, I am now in IIT. So my understanding is very clear that when we have advanced technology is hand, we also cannot ignore the technology which is back there with our people in the village. So the combination of traditional and the modern technology is perhaps the way forward. Thank you very much for this. Thank you, Dr. Mitra. Maybe some of you are interested in understanding more about robotics and how the adaptation measures, mitigation measures. Maybe you can catch hold of him during evening. Maybe we can request him to stay for some time. Now I will request Palmi Banerjee, just to give you a brief introduction about her. She is again from JNU. Professor Kundu is sitting here, again a student of her. She has been in JNU, did her PhD. After that, she has worked in TERI also. She has been instrumental in working in India, Nepal and Bangladesh. So she has some knowledge of the SAARC countries also. She was doing a lot of research, coming out with a lot of publication, which was more from what needs to be done. Now she is heading one of the corporate organization where she is. So let's understand from her what challenges she is facing when she was writing it, what needs to be done, and what is being done now.
So maybe that will be a very interesting thing, क्योंकि ये corporate का एक लेके आएंगे. अगर हमें आगे जाना है तो we need corporate engagement to be more and more. आपने एग्जीबिशन देखा होगा, कॉर्पोरेट के बहुत सारे लोग हैं. शी इज़ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जो कॉर्पोरेट साइड से आ रहे हैं. मैम, अप टू यू नाउ. Thank you, sir. Thank you. I give my thanks to the organizer for bringing me here. And it's an honor to present in front of Kundu, sir. Thank you, everyone. So I feel that I'm a little odd to this audience because I am the only person who is representing corporate or the industry. And today I'm here. I have no presentation. I'll be very quick. I'll finish it off. I'm not here to explain how great things that we are doing as a corporate. I'll explain, I'll introduce myself, my organization. But I want to share a small story of how, in a very painful way, my company has learned that within the fence, the water is not there. It is going down and down. You better do some work. So I come from a company called Abyss. It's a livestock company. It's a group called IB Group. It is the biggest group in Chhattisgarh. We are 15,000 CR profit-making company. We are based out of a district called Rajnandgaon, which is around more than 2 hours from Dhamtari. And I head a department called ESG, Environment Social Governance, and this department was been created because it's a private limited company and wanted to be a listed company. So ESG is very in nowadays. Now, since we are in ESG, the entire journey of this water started almost like 2 years back. We have a plant in Dhar district of MP. We have plant across India. We have 12 plants. And we are working with 20,000 farmers, contractual poultry farming. The manufacturing units, we produce animal feed, which is fish feed, shrimp feed, and poultry feed. So we have a plant in Dhar, and it is a water stress zone, but the company was informed that within the fence, we have enough water. We'll dug borewell and we'll get water. So the construction started after almost 8-9 months of the construction. When our borewell started failing, we have realized that we are running out of our water stock. And then the management came and then we thought, then what to do now? The construction has started, land has been purchased, every NOC has been taken from the government, from the Central Groundwater Board. So with that understanding, the first thing that we bought an agency, we started working with CII in Delhi from Triveni Water Institute, and there we started understanding that the water that we are getting within the fence is part of a watershed outside the fence. So first delineating the watershed might be a very normal thing for all of you, but for an industry, for a corporate, spending 50 lakhs to do that study is a cost for them. So every time they purchase a land, they have to undergo a study to identify whether that land has water or not. Right now, generally they don't do. They identify whether the market linkages are there, whether it will be logistically possible, whether the raw material can be easily procured. But water, yes, it is there. We will get it. So with that understanding, when the watershed boundary, we delineated the watershed boundary, which is 80 square kilometers outside the fence. We realized that we are in the upper reach of the watershed. So we are actually generating good amount of water. अच्छा water आ रहा है, बह जा रहा है सारे नीचे. और जब हम लोगों ने लैंड खरीदा था, तब हमको लगा था कि आसपास, आई थिंक आप लोग बोल रहे थे कि थोड़े दूर में ही वाटर इज डिफरेंट. सो ग्राउंड वाटर इज सो फ्रैक्चर्ड. तो वो देख के आसपास के गांव के साथ बात करके लैंड तो खरीदा गया. ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बिगेस्ट कंपनी, बिगेस्ट प्लांट ऑफ आवर कंपनी केम अप. बट when the bore failed, that we realized that we are in the upper reaches. Now the second thing is, we understood the watershed characteristics. We did everything possible to understand what are the pockets of water generation and the pockets of water accumulation. पानी बह के इकट्ठा कहाँ पे हो रहा है? हमारे प्लांट के अंदर तो भैया हो नहीं रहा है, बाहर ही जा रहे हैं सब, बाहर ही होके प्लांट में इकट्ठा हो रहा है. So with that water generation, हम लोग deep clay, basaltic clay soil था. परमिएबिलिटी बहुत कम है, पानी इनफिल्ट्रेट बहुत स्लोली हो रहा है.
इसलिए वो लो एक्यूमुलेशन जोन था. उसके बाद चलो हो गया, now we have to dig borewell and we have to find out a solution. Then we did a geophysical electronic resistivity survey. These are the things which an IIT understands, they do, but for us, every penny that a businessman spends is a cost, and they calculate how much they will get. Now, with that understanding, we actually identified within the fence what best can be done. And with that, we went to how much, whatever the areas that we identified. The third one was this borewell performance test. उसके बेसिस पे कितना पानी जो भी है वो कितना दिन चलेगा. हम लोगों को समझ में आ गया 1 साल से ज़्यादा चलेगा नहीं वो पानी. जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो 1 साल ही मीट कर पाएगा. तो अभी रिचार्ज, बाहर जाना, फेंस के बाहर जाने से अलावा कुछ रास्ता नहीं है. एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग देयर इज़ अ ह्यूज चेंज दैट हैज़ हैपेंड इन द मैनेजमेंट. उसके बाद से अभी हम लोग CSR हम करते हैं एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, हेल्थ पे. पानी कभी भी वो फोकस नहीं रहता है. और इंडस्ट्री, मैं सोच रही थी जब पंचायत बोल रहे थे कि पंचायत पद्मश्री मिला, क्योंकि हमेशा उनको ब्लेम किया जाता है. सेम वो इंडस्ट्री को भी, इंडस्ट्री शाई अवे करते हैं ऐसे फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वी आर मिसिंग आउट अ ह्यूज chunk of participants to talk when we are politicians, academicians and grassroots organizations. तो जब हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग से बाहर गए और राजनांदगांव में, द फर्स्ट थिंग, वी आर बेस्ड इन राजनांदगांव और हेडक्वार्टर इज राजनांदगांव. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर पंचायत के साथ बात करके CSR को, एक आप लोगों को पता होगा CSR हमेशा प्लांट जहाँ पे लोकेट होता है उसके आसपास ही किया जाता है. वो जो पंचायत से डिमांड आता है वही किया जाता है, उसी पे 25 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर. इस बार बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग वी वेंट फ्रॉम दैट 25 or 7 kilometer radius to a watershed approach, and we have taken up villages राजनांदगांव के जो हमारे प्लांट के आसपास, and we went to Maula Manpur. Maula Manpur is far away from Rajnandgaon. People who are from Chhattisgarh will be knowing. डिस्ट्रिक्ट इंटीरियर है, वहाँ पे हमारा ना कोई प्लांट है ना हमारा कोई प्रोजेक्ट है, पर वो वाटर स्ट्रेस एरिया है. सो वन अंडरस्टैंडिंग कि वाटर बहुत क्रिटिकल है और इंडस्ट्री का वो एक रोल बनता है टू डू दैट. एंड सेकेंड, जहाँ पे सोर्सलेस विलेजेस है, गवर्नमेंट ने वो भी दिया कि सोर्सलेस विलेजेस के ऊपर काम कीजिए जो आपके वाटर शेड के बाउंड्री में है बट 25 किलोमीटर रेडियस के बाहर है. सो दिस स्टडी हैज़ मेड दैट चेंज, दैट क्रिटिकलिटी of not getting water within the fence, with an understanding that there is enough water. You dig a borewell, you will get it with all the NOCs and everything, on paper, you are on point. That understanding has changed everything and made us take in water as our CSR, as everywhere we land, we purchase a land, पहले water study होता है, उसके बाद land declare होता है कि वो business के लिए जाएगा या नहीं. So with that understanding, I will request the organizer in such kind of a forum, please invite more industry partners. They may have some kind of stories to share. And with that kind of a thing, they will break up that kind of a notion that that shyness for them, or they should be made comfortable to share their part of the story. Thank you, everyone. I thank Ms. Banerjee for giving us an insight from the corporate sector. So in the morning we were listening to Dr. Kondo, where he said that he remember his mother fetching the water and all. Now when we are talking about Mr. Janta, who is from Sri Lanka, maybe many of the things he has taken from his childhood. In his childhood, he used to stay in a protected area. Now what happened was that after finishing, he was doing his MBA, doing something in marketing, and he was marketing things. Then he came across the WW initiative and the Earth Watch. What happened was that he participated in that many people do, because the interest was lying somewhere else. There was some kick which came from inside, and then he started work with, and he was given the climate champion by the Earth Watch in 2012. After that, he realized that he should do something for the Sri Lanka. So what he did was that he started an organization and started protecting the
remaining rainforest in Sri Lanka. And his work started from there. We understand हमारे देश में भी जंगल बहुत सारे हैं, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ जंगल के बहुत है, और बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं कि जल, जंगल, ज़मीन, अगर ये तीनों चीज़ें अगर बचती हैं तभी हम आगे जा पाएंगे, क्योंकि अगर जंगल बचेंगी तभी जल आएगा, ज़मीन बचेगी तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे. तो लेट्स लिसन टू आवर श्रीलंकन पार्टिसिपेंट व्हाट ही हैज़ टू से about his journey, about the rainforest, what he has done, how he is protecting. I will simply request you to limit it to 8 minutes so that we can ask more questions from you. So from being an MBA guy from corporate, he has come to this area. So let's understand from him. Thank you. What I tell you, it's like, yeah, well, ancient water management and good afternoon, everyone. My name is Jayanta Vijay Singh, and I'm coming from Sri Lanka. Thank you very much for this lengthy introduction for my work and who I am. Just additional to set the grounds, I currently work on a GCF project. GCF is Green Climate Fund. Working on the water sector in Sri Lanka with Global Water Partnership, which is one of the biggest water INGOs in the world, and also with another South African consultancy called Quava Earth. So that is just to tell you what I do right now in water sector. And I've been working in the water sector for a long time. From forestry sector, I work parallelly on the forestry sector and also on the water sector. I particularly like to begin my conversation with you, asking maybe a couple of questions so that you might feel interacting, because I don't think there was any chance before to ask questions. Very quick session, maybe 1 minute. Do you believe, those who believe, that there is a water scarcity in the world? Can you raise your hand? Those who believe that water scarcity in the world, there is a water scarcity. Okay, I see about 10 hands, I would say 12 maybe, 15, it's increasing. I hope that it's not gonna be everybody. Okay. Those who believe that there is no water scarcity in the world, can you raise your hands now? Very good. Okay, right. I see some, like putting up their hands for both. So, but it's okay. Now, the second question, the follow-up question, these are basic questions I'm asking. You will know why I'm asking these questions though, just to get you involved also, and also to set the background. What percentage of planet Earth is water? Can someone say, or, just what percentage? So, okay, I get the answer here, about 70%. Okay, that's a good answer. Out of this 70%, what percentage of water is drinkable? 0.06. Exactly. Very good. Very good answer. 3%. Out of this 3%, what can we actually drink leaving out all the glaciers, melted, the ice and all of that? What percentage out of that 3% is actually accessible? 0.8. Okay. I have two answers, but these are very good answers. 1% and 0.3%, yes. Something about 1%, if you really work out. Now, that is where I want to begin with. It's just about 1% of water out of all the water is available for almost 8 billion people. And this is today with 8 billion people. But back in the day in Sri Lanka, when the population was far less, that our ancient kings have actually realized that the water is the most important thing. When we ask about a lot of things, we give different answers. What are our essential needs? We say clothing, housing, so on and so forth. But water, after oxygen, definitely comes first.
Both are related to forestry, marine ecosystems, and all of that, and it's quite related to what I do. Now, back in the day, our ancient kings, how they basically understood this and built these reservoirs and made sure that the water availability is, significant, that the agriculture can be done, and that there is no food scarcity, and that the administration was possible, and all of that were very well thought. And I'm dwelling into a little bit about our history, which is to date benefit in Sri Lanka. No matter whatever we go through, we will never be a country with food scarcity. We will not go hungry because our kings thousands of years ago thought about it. Now, we know some of these I'm going to skip because these are general things that you would know. We know that there have been plenty of bloodbath, killings, and conflicts, wars because of water. Water is probably, now it's oil mostly, for oil there is conflicts all around the world. But if you really look at past conflicts, it has been on water. And that is why some of our kings have realized this. Let's not single drop of water go waste into the sea without benefiting the world. That was King Parakramabahu who said this in 12th century AD. Not a drop of water. Everything that rains and going through these rivers and various channels, streams, so on and so forth. The vision of this king was to tap everything, literally tap everything, and not let it flow to the ocean. And that is why we had a country that is basically governed based on the principle of, based on water administration, using the water ways, water channels, or streams, rivers, and all of that as boundaries, administrative boundaries. We had a water management master plan. When we looked at in the past, we had country level, interbasin level, reservoir level, sub-watershed level, village level, and field level. And some of the Grama Niladhari divisions, which is the smallest administrative body in the Sri Lankan administration, is also had always been demarcated with a stream, often demarcated with a stream. Stream was the boundary, and it was so important for us. And the country was divided into many parts, many provinces, or many separate states based on the water civilization back then. And we have a country like this. This is very rare to see in the whole of the world, simply because we have 103 rivers flowing like almost on the entire 360-degree angle everywhere. And we had various different systems. I'm not going to go into everything, but if you look at, there were huge, mega irrigation projects thousands of years ago. As you would know, in Sri Lanka, the oldest skeleton of a man was found called Balangoda man, which is 30,000 years old. So our civilization is very, very long. And 2,000 to 2,500 years ago, we realized this hydrologic potential. And based on that, we did developments looking at various river basins. And Kalaweva, Tisaweva, and there are many. I will talk about them separately. And when I talk about them separately, you will know what these systems are. And in some of these agricultural tanks and around them, there were maps that were done thousands of years ago. This is called the Stargate. And the Stargate was later believed to be, or found out to be, historians call it, the map of the Anuradhapura city. And these cross marks, these marks are all the tanks that were available in the city, and they were clearly demarcated and presented. And you can see how many during the Anuradhapura civilization, during the kings of Anuradhapura, how many large reservoirs and large tanks was built. And there were many structures within that system, not only to store surface water, but also to feed the groundwater. And these are some of the
these are some of the pictures of some of those structures that were built. And I know in India also there are structures similar to this, but not as old as this. And maybe there are older ones. Correct me if I'm wrong. And water is so important, and groundwater table is also very, very critical in terms of many things. Urban planning, urban development, and feeding urban population. And when the groundwater depletes, the problems occur. And as you would see, Beijing, Mexico City, Jakarta, Bangkok is facing this problem. And I read that, I think I should have it here. Here, I find Delhi is also sinking on an article when I was searching, doing some of the research to understand what's happening in India. So when the groundwater depletes, it's a huge issue. But the kings back then, thousands of years ago, realized how important it is to make sure that this groundwater charging is important. And like I mentioned, I have about 2 to 3 minutes, so I will just quickly show you. This is how the ancient cascade systems were developed. On the low-lying area, between the range of about 100 meters to 250 meters, nothing more, majority of the tanks. And importantly, this is very important to understand, I'm not going to look at the drainage of all the water that is raining. Most of the water we were able to tap, at least more than 50% in the past. Now these are different cascades. I'm not going to talk about all of these different cascades because of the time limitation. You can see how many tanks, what are the cascade names, so on and so forth, how the cascades were developed. And the tank cascade system was distributed on the north central and in the southern part, feeding all the agricultural lands and the dry lands, making it possible to do agriculture, and also making those lands no longer dry and making them wetlands. And there is so much of ecosystem components that were there in this, that they've looked at the catchment, sediment collection, filtration, and all of that were integrated in this cascade system, which is actually now being discussed to name as a World Heritage. So Sri Lanka's tank cascade systems currently under review to name as one of the World Heritage. Hopefully we will get it done. If that happens, it's a separate study of its own. And these are the reasons why the tank cascades were done and why the tanks were done. And best ancient irrigation systems in Sri Lanka, I'm not going to talk about it because it's going to take about another 5 minutes. But have you seen this? Those who have seen this, yes? Very nice. This has a fantastic story. But I don't have to tell you that story. This, how the water was provided all the way up to this castle, and how the castle was protected with all the water around it, and how the water was harnessed to feed this entire structure. This probably is the world's oldest rainwater harvesting system. If there is any other record in the whole world of a rainwater harvest system older than this, you can maybe correct me, but as far as I know, one of the oldest. And how they have done it is interesting. I'm running very fast because my time is up now. And these are how some of the carvings just to collect water was done back in the day. And the traces of that and how it had been done, filtration was done, collection was done through the small ponds, and then outlet canals, all of that were runoff canals. Eventually the water will be collected to feed about 9,000 people who lived and maintained the palace. 9,000 people at the time. And that is how the ancient civilization. But now we have problems. We have problems because we did not maintain the systems. We have not looked at the sustainability of these systems. We've not looked at managing water well, and that is why River Kalu, one of the biggest rivers of the 4 biggest rivers, we now have about 70% of all the water flowing out to the ocean, not collecting it on time. With that, I will conclude my presentation because of the time limitation. Finally,
We can look at it many different ways. In the morning, it was discussed how a civil engineer would look like, how an environmentalist would look like, and how developmental partners would look like, how the politicians would look like. But I want you to see our tank cascade systems as something that addressed all of these needs, and that is how Sri Lanka back in the day thrived and still is not a country that's starving no matter what sort of economic recessions or downturns we go through. Thank you so much. Yeah, thank you, Mr. Janta. Now, next speaker is Mr. Vicky Anand. विकी आनंद जी के साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये राजस्थान जोधपुर में आईआईटी के टीचर हैं, एक सूखे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन ये जिस एरिया से जाते हैं वहाँ पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। अभी जो इनका एरिया है वो बाढ़ में डूबा हुआ है, बिहार में है, गंडक नदी के बगल का है, और इनका जगह वाल्मीकि जी के लिए नामी है, वाल्मीकि नगर वहीं पे है। ये एक्सपर्ट हैं वाटर मैनेजमेंट में, हाइड्रोलॉजी, वाटर क्वालिटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। आपके पुरानी स्पीकर जो डॉक्टर जनता जो बता रहे थे, राजस्थान में भी वाटर कंजर्वेशन बहुत पुराना रहा है। जितने भी किले और घर की जो हम बातचीत करते हैं वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पहले से लेके की जा रही थी। पहाड़ों को के ऊपर कैसे रोक के किया जाए उसके ऊपर है। अब इनका जो आईआईटी गुवाहाटी का जो काम है वो इनसे सुनना चाहेंगे, प्लीज़। Thank you for nice introduction, and thank you for the organizing team, Rajiv Ranjan ji, Namrata ma'am, for inviting me. So I quickly going to discuss about some of the aspects what we are doing currently. Yeah, so thank you. So I am going to discuss about some aspect of sustainability for drinking water sources. So in IIT Jodhpur, we have a center of Jal Jeevan Mission, and we are caretaking of that also. In this regard, we have done some work. I will discuss 3-4 work for that perspective. So when we discussing about with respect to the drinking water sources, so full Rajasthan is basically they are based on the natural harvesting only. So now, once this Rajiv Gandhi lift canal and other canals have come into the picture, the people forgetting about the natural harvesting system, and now again the rainwater is going to be harvested for the different purposes, because the water that is coming from the other states, there is going to be some war or everything. So we have to rely on the our natural sources also. So in that context, we believe there will be a two-way of approach of the problem. We have to manage our existing resources, and then we also have to work on to the new technology that will require to access the new source of water. So in this concept we have working on both sides parallelly, and I'm going to discuss at least two examples from the both sides. So we believe in managing the existing sources, we are working on the artificial recharge borewells. So Rajasthan has approximately thousands or more thousands of borewells that is already dried. They are basically supplying the water in the past, but now they are dried. They are gone beyond 150 or 300 sometime meter in the level. So we are working on some part of that. We are also working on the grey water management that one of the speaker in the first session he explained very nicely. We working on rainwater harvesting, water saving and other technologies for a smart irrigation system. In the new technology development, we are also working the desalination technology for arid and semi-arid system. Because the Rajasthan is basically a landlocked area, we have to work on the zero liquid discharge process. So our desalination system has to be proof for the zero liquid discharge. We cannot throw the concentrated brine into the bare land because it's create a lot of severe problem in the environment. So we have to do for zero liquid discharge, and that we can achieve by looking for the
harvesting the salts from the concentrated brine. Some of our group member is also working on air water harvesting and solar assisted or solar hybrid model of desalination system. So we believe the public awareness, public education and public water scarcity is very important. In this context, we have taken one of the example for the artificial recharge structure. So we choose, with the help of the PhD and with the help of groundwater board, we selected one of the water recharge center, borewell, and we choose smartly so that we can have our natural water drainage that is coming from the other hilly region at the lower region. And we fabricated one of the borewell, and this is basically completely dried. And we tried to create one filtration unit around that. And you can see that. So when we are doing this, so we have created a treatment system also, because the rainwater that is coming, they are also coming with some mud and all. So that has to be treated, and then only we can discharge. So water quality, when you are applying for the harvesting or any artificial recharging, so its quality has to be matched with the ISO or WHO guideline. So for that we have created this technique, and then after that, once we do that, we got lot of water in this. So you can see the one of the this is the first rainy season we collected this amount of water, and that is basically getting recharged. From the other project aspects, we have also working on the grey water management evaluation that is under Swachh Bharat Mission scheme, Gramin scheme. And we visited different villages into the Rajasthan and other state of the other state also. And we look onto the objective, how we can basically effectively or sustainably we utilize the grey water management for different applications. We provide, we look onto the scope. We also provide the different solution in terms of their existing structures. They can implement a small modification in terms of if they can have modify a little bit in terms of if they can have a more aeration process, that the ordination and that other contamination can be easily controlled. The other grey water management that we are focusing currently in IIT Jodhpur. So IIT Jodhpur campus, you can say, is running currently on zero liquid discharge base. All the water, we have approximately 1 to 1.5 lakh liter of water daily consumption. We have 4,000 students and approximately 5 to 700 staffs. And the all water that is coming as grey water and black water, we are treating, and we are using this treated water into the our horticulture purpose. And also we are treating this grey water using the decentralized wastewater treatment technology into the stage of, so that we can use those water for our machineries. So our most of the cooling or our AC system that is centrally working is running with this quality of water only. So in Western Rajasthan, Barmer recently, not recently, in 2020, they reported a very big aquifer that is found. And the challenge is basically that aquifer has very deep, and the depth is basically varying from 350 to 1500 in depth. And if we have to, the other challenge is basically this is saline also, but this quantity is so enough, if we are able to treat it or we have to explore, then it can cater the whole Western Rajasthan problem for decades. This can supply the water for, so here we also suggested some of the technology, how we can combine our technology with the solar desalination, and for the particularly for semi-arid and arid region in Barmer area. So I'm not going to discuss in detail. And through this zero liquid discharge plant, we are looking for to how we can harvest the salt, and that can be sold out, and this can be like a revenue for the whatever our operating cost for the water requirements treatment. And recently we have we done one study also, and we took exact the same condition of the water,
And this we have done the publication also for this work. In the next context, once this smart city concept is coming into the picture, so the water quality and into the urban area is very important. So here also we thought, because the if you are looking for a dream of the smart water, smart cities, so a smart city that cannot be you cannot imagine without any ponds, in any step wells, any natural water bodies. So you have to revive those natural water bodies. And in that context, we have also proposed several methodologies for the how you have to control, how we can monitor the water quality control, comprehensive analysis. Then on that basis, we have formulated some of the guidelines for the advanced and on the different fundamental level of studies, and that we can deploy it on that basis, and this can help to the getting the creating water bodies into the urban cities. And with this, we definitely we can have clean water bodies in urban cities, and that can have multiple advantage over that. After that, this is the last piece of work I'm going to discuss. We have recently visited one state where we assess their water supplying scheme into the urban areas and into the villages also. And we visited 30 locations. We found that approximately 9 are working very proper, whereas approximately 6 are partially working, and they all are based on the slow sand treatment process. And these are the some of the treatment sites. You can see the first image. They are basically dried, so they doesn't have even the water. They are to supply or to treat the water. Some others are bodies are basically very dirty in nature, so that has to be properly cleaned and properly treated in terms of water quality, in terms of water quantity. And then we created. So they requested also to create a KPIs. So because this water supply scheme, they have like in thousands in number, so they have to monitor those quality of the water supply scheme. So we have created the KPIs, key performing index, to control those water quality initiatives. And under that, we can basically get the desired water supply scheme, that is as per the JJM mission. And with this, I can thank to our organization. And this is our key performing index that I told we have prepared for them. With this, I will thank you. Thanks. Thank you, Professor Anand. कुछ प्रोटोकॉल्स एज हमारा अभी हमारे ऑनरेबल सीएम की विजिट भी शेड्यूल है, तो कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे विच इज़ नीडेड. So I just request you to just bear with us, and we will just fix it, and then we will continue start with the immediately the next session. ये उमाशंकर पांडे जी पहले पद्मश्री रहे हैं पानी के क्षेत्र में, उनको वाटर वॉरियर भी कहा जाता है. उनकी बहुत बड़ी उपलब्धिता रही है बंजर क्षेत्र को कैसे कृषि योग्य बनाया जाए. उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी क्या किया है, जंगल में अपना काफ़ी योगदान दिया है, रूरल एरिया पर कैसे काम होता है. मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट रही है, जो मैं अभी उनसे बातचीत भी किया, कि उन्होंने अलग अलग लोगों को सुना है, यहाँ एकेडमिक के लोग हैं, कॉरपोरेट के लोग हैं, और वो खुद ग्रास रूट पे काम करते आ रहे हैं. तो वो अगर बता पाएँ कि सब लोगों का समन्वय लेके अगर हम आगे कैसे चलें और ग्रास रूट पे काम कैसे हो पाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो मैं आपसे तो ज़्यादा सुनना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, 5-7 मिनट में अगर संक्षेप में बता पाएँ, फिर ये चर्चा तो जारी रहेगी. आइए. सम्मानित जल के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जल योद्धा, मैं अपनी बात कहीं से शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे एक और दायित्व सौंपा गया. ये बिल्कुल सही है कि विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका हो, उद्योग जगत की क्या भूमिका हो, हमारी व्यक्तिगत क्या भूमिका हो,
ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका हो, जो हमारा हजारों साल पुराना पानी है जो ज़मीन के अंदर है, इसको कैसे संरक्षित किया जाए, एक बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने मुझे दिया है। तो मैं आप सबके साथ साझा करूं। सम्मानित, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है और जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने सबको एक साथ किया है, पूरी दुनिया में जो हमारी आबादी है, राजीव जी बहुत बार बार इस प्रयास में है कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जाए। मैं पूरी आपकी व्यस्तता को समझ सकता हूँ, जो संचालन करते हैं उनकी बाध्यता भी होती है। और पूरी दुनिया में हमारी आबादी 18% है, भूमि हमारे पास 4.5% है, पानी हमारे पास 4% है और मीठा पानी हमारे पास 1% है। पूरे जीवन में व्यक्ति को 80,000 लीटर पीने के लिए पानी चाहिए। डॉक्टरों की सलाह है कि 2600 ग्राम पानी चाहिए रोज, और बर्बाद कितना करते हैं हम? 300 लीटर। इस विषय पर हमें सोचना होगा। ये जो जल का कमाल है, आंखों का पानी खत्म अंधा, दिमाग का पानी खत्म पागल। ये बिजली बनी पानी से बनी, ये घड़ी का टाइम आया पानी से आया, बाट माप आया पानी से आया, कंप्यूटर की मेमोरी आई पानी से आई। अंत में व्यक्ति जब लेता है कि इसके प्राण जाने वाले हैं, तो लोग क्या कहते हैं? गंगा तुलसी दे दो। और न्याय का आधार क्या है? पानी, गंगा उठा लीजिए। तो जो न्याय का आधार है, जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है, तो मैं केवल ये बात कहूँगा आज के शुभ अवसर पर कि जो मित्रों ने उद्योग जगत के बगैर हम पूरा नहीं कर सकते, उनकी अपनी भूमिका है। IITN के भी, IIT के डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे गुवाहाटी के, आपकी बड़ी भूमिका है, आपकी भूमिका है। श्रीलंका के साथी अभी बात कर रहे थे, उनकी भी भूमिका है, ग्राम प्रधानों की भूमिका है। और मेरा मानना यह है, वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं पर रोक लो, कैच द रेन। पानी गिरा धमतरी में और रोका जाए बिलासपुर में, या वापस उसको बिलासपुर से धमतरी लाया जाए, ये खर्चीला भी है और टिकाऊ भी नहीं है। हमारे जो पुरखे थे, जो पानी के भगवान राम की सारी यात्रा पानी के नज़दीक रही। कृष्ण भगवान कालिंदी के पास ही उनका जन्म हुआ। शंकर जी गंगाधर है, ब्रह्मा के कमंडल में पानी है। जो मैं विधि जानता हूँ, जिसकी बात मुझे कहनी थी, खेत पर मेड़ बनाइए, मेड़ पर पेड़ लगाइए, एक ऐसी विधि है जिसमें केवल एक फावड़ा लगता है, जो प्राचीन है। और मैं इसलिए बात करता हूँ बार बार, ये खेत की मिट्टी, खेत में पानी तो आपको मिल जाएगा, एक साल नहीं बरसेगा, दूसरे साल बरसेगा। अगर खेत की उपजाऊ मिट्टी बह गई, 1000 साल लगते हैं उपजाऊ मिट्टी बनने में। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ कि मिट्टी माँ है, मिट्टी को बहने न दें। प्रतिदिन 20,000 टन मिट्टी बहती है। ये नदियाँ क्यों मर गई? नदियाँ इसलिए मर गई कि प्रत्येक गांव में, हम जब आज़ाद हुए 25 लाख तालाब थे, हर गांव में छोटी स्मॉल रिवर हुआ करती थी, आपको तो मालूम है। छोटी छोटी नदियों में गांव की मिट्टी बहकर भर गई, और हर छोटी नदी बड़ी नदी बनाती है, और वहाँ पर पानी नहीं है। अगर गंगा नहीं है तो देश नहीं है, गंगा नहीं है तो संस्कृति नहीं है, गंगा है तो संत है, गंगा है तो सनातन है, गंगा है तो भारत भारत है। इसलिए गंगा माँ है, और गंगा माँ का अस्तित्व बचा रहे, यमुना मैया का अस्तित्व बचा रहे, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए। अभी एक हमारे मित्र नीरज वानखेड़े हमको यहाँ के बारे में बता रहे थे, पूरा उन्होंने स्टडी करी, कुछ बहुत काम भी किया है। गणेश थोराट आए हैं नाम फाउंडेशन से, नाना पाटेकर जी के यहाँ से, अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के इस शुभ अवसर पर ये जो भवन बना है, पानी बेजान को भी जोड़ता है। आप लोहा लीजिए, सीमेंट लीजिए, बालू लीजिए, अगर पानी नहीं है तो मकान नहीं बनता है। अर्थात बेजान को भी जान देता है, और जिसके आंखों का पावर अधिक होता है उसमें पानी ज़्यादा होता है। कहते नज़र लग गई, नज़र पानी की है। पानी पत्थर को तोड़ता है, और पानी, ये आँख का चश्मा पानी से ही बनता है। कांच कैसा भी हो, अगर पानी से घिसा नहीं जाएगा तो ये नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ खेत पर मेड़ बनाइए,
उसमें अरहर लगाइए, नींबू लगाइए, सहजन लगाइए, करौदा लगाइए, तुलसी लगाइए, पुदीना लगाइए। मैं छोटी सी विधि जानता हूँ, इसी विधि से मेरी देश में पहचान है। पानी सरकार के भरोसे नहीं, समाज के भरोसे रुकेगा। सरकार सहयोग कर सकती है, संस्थाएं अपना काम कर रही, संस्थाएं बहुत बड़ा काम कर रही हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, वो दिखता नहीं है। लाखों गाँव में, भारत के 6 लाख गांव, 7 लाख गांव में, 2,58,000 ग्राम पंचायतों में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका है, और उद्योग जगत की भूमिका है, मीडिया की भूमिका है, सबकी अपनी भूमिका है। मैं उच्च शिक्षण संस्थान से निवेदन करूंगा कि वे अपने पानी के विषय को भी, जापान की बहन को सुन रहे थे, जापान में पानी के लिए प्राथमिक स्तर से पढ़ाई शुरू है। श्रीलंका की बात भी अभी हम सुन रहे थे। ये हमारे पास के जो देश हैं, जो दुनिया का, अमेरिका जो दुनिया का पानी का सबसे बड़ा, ब्राज़ील के पास पानी है दुनिया में, और ब्राज़ील अमेरिका में 500 मिलीमीटर पानी बरसता है, 550 मिलीमीटर, और भारत में 900 मिलीमीटर पानी बरसता है। तब भी हम प्यासे हैं। मैं मानता हूँ कि आप सबने मुझे 5 मिनट का समय दिया है। मैं जिस विद्यालय का विद्यार्थी हूँ, समय का बड़ा पाबंद हूँ। जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो रोता है उसका भाग्य रोता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है, जो चलता है उसका भाग्य चलता है। मैं निवेदन करूं कि मेरी जो एक छोटी सी बात है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पानी पानी क्यों चिल्ला रहा हूं। एक जंगल में आग लग गई थी, उस आग में सारे जानवर भाग रहे थे। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला रही थी, और वो पानी अपने चोंच से बुझा रही थी आग को। हाथी ने पूछा, बहन तुम्हारे आधा बूंदा पानी से क्या इस जंगल की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने जो खूबसूरत उत्तर दिया, बस मैं उत्तर के लिए काम कर रहा हूँ। उसने कहा, हर चीज़ का इतिहास लिखा जाता है, और यहाँ नम्रता गांधी का भी इतिहास लिखा जाएगा कि नम्रता गांधी इस जिले की कलेक्टर थी। तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, छोटा सा काम है, राम सेतु बन रहा था, गिलहरी की हमारी छोटी सी भूमिका है। हम सब मिल करके इस देश को जलति तिरंगा, तिरंगे में भी राष्ट्र का गान किया गया है। इसलिए कोई भी मान पानी से है। सबसे प्राचीन चिकित्सा जल चिकित्सा, सबसे प्राचीन यातायात का साधन पानी। मैं चूंकि विश्वविद्यालय में रहा हूं, तो मास्टर की जो स्थिति होती है वो बहुत समय लेती है, लेकिन मैं यहाँ नहीं लूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आप सबने यहाँ आमंत्रित किया है, यहाँ के जिला प्रशासन को और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ प्रशासन में जो लोग लगे हैं, सुरक्षा में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, वन विभाग के कर्मचारी हैं, सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। फिर कभी अवसर रहेगा हम आपके बीच में आएंगे। मुझे लगता है यहाँ का एक धमतरी का डिक्लेरेशन, राजीव जी, धमतरी जल का जो जल जागरण का जो डिक्लेरेशन है वो आप बनाइए, हम सब इसे स्वीकार करें, भारत सरकार तक इसे भेजें। हम सब जितने भी मेरे साथी पद्म सम्मान के साथी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है इनमें भी कोई पद्मश्री आने वाले पद्मश्री ही बैठे हैं, कोई पद्म विभूषण बैठे हैं, कोई पद्म भूषण बैठे हैं, कोई भारत रत्न बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबसे हमें सीखने को मिलेगा। जो भी मेरी कहानी आपको देखनी हो, गूगल पे सर्च करेंगे, उमाशंकर पांडे, जल योद्धा उमाशंकर पांडे, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, जलग्राम जखनी, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तमाम बड़े बड़े अखबारों में, मैगजीनों में हमारे विशेषांक हैं। हमने सबने, राज समाज सरकार ने किसानों के साथ मिलकर के काम किया है, और एक बड़ा बदलाव जो देश के अंदर देखने को मिलता है। जलग्राम जखनी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बात खुद नहीं कहनी चाहिए। जब देश का प्रमुख व्यक्ति आपके कामों की चर्चा करें, मुख्यमंत्री चर्चा करें, राज्यपाल जी चर्चा करें, राष्ट्रपति जी आपके काम की प्रशंसा करें, तो फिर वो काम अपने आप में समाज का काम होता है। और मैं आपके बीच में आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 6 मिनट हो गया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर पांडे जी। कुछ प्रश्न उत्तर का समय रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ से इशारा आ रहा है, इसीलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि कुछ प्रश्न लेना चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पाए। अब जो भी मंच पे बैठे हैं, आप इनको जहाँ में मिले इनको पकड़िए, ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, मे बी दे विल ट्राई टू आंसर यू। नाउ आई विल थैंक एवरीवन सिटिंग ऑन द डायस, सो मे बी वी हैव टू वैकेट द सीट फॉर मिस्टर राजीव बिकॉज ही वांट्स टू start another session. If he wants
to facilitate them, the dais is yours. So, thank you all, and it's a really very honored, to have this kind of conversations. I know we are running late because of some times and some issues, but still we are managing, and very good about that. Okay, still people are ready to listen us. So that's why. So now I will request, sir, if we can facilitate one by one. So let's start with Dr. Sudeep Mitra, sir. Yeah, can somebody take some photograph? Yeah. Two 6 double one final. Okay. Statistic. The next one is Paulini Banerjee. Yeah. Then we have Mr. Jayanta. Then once again Padma Shri Uma Shankar Pandeji. My friend Dr. Vicky Anand. It is and our moderator, Mr. Praveen Bhardwaj, sir. Can I have the group photographs of these people? Sir, request you please come on the stage, so we will have one group photograph with all of us. Please. Done. So thank you all. Thank you. So nice of you. I know we are now for the next session. I am also the moderator for the next session, but it's the most interesting session. So let me just call. I know now these disturbance will come out, but we can't hold it because the many programs are running together, especially these and all. So let me call Shahati Devi. Sorry, once again, I cannot pronounce your name. Sorry for that. The most inspiring story about her, some time back I had just followed her on a LinkedIn, and whenever I saw her post, please, it was most adventuring and most admire about that, whenever she write about that, villages, works and other things. So it always gives, so much of appreciations what she is doing. So I follow her, and that's why I got an opportunity to call you. Please, you can join this. Let me call another lady from this, Dr. Vishwavandita Kar. She is presently the Dean of KIIT University. I got an opportunity to work with her, and this session is like, that's why the reason I had chosen to, to moderate this session. The reason is very simple. You can come from that side, ma'am. She has done a very fantastic research. So when I met a year back and we had a discussions, she showed me then her research and the documentations, and especially like the innovations and all that relating with the water percolating breaks. It was mind-blowing. And then I got an opportunity, okay, can you become my mentor and guide, so at least I can learn from you. So she has agreed, and I got an opportunity to invite her in this conference. Another one is one of my old friend and good, Mr. B.M. Balakrishna. Let me just welcome him. इनकी स्टोरी बहुत यूनिक है.
आप जब कह रहे हैं कि गूगल करेंगे और गूगल के ज़माने में बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाता है, तो मैंने भी इनका गूगल स्टोरी पढ़ा था और गूगल स्टोरी ये कह रही थी कि इन्होंने अपना करियर एज ए कार वॉशर स्टार्ट किया था और आज ये 100 से 200 करोड़ के कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने अपना खुद के अलग अलग ब्रांड्स वाटर सेक्टर्स में काम करते हुए किया। एंड जब मैं पहली बार इनसे मिला था और इनकी एक स्टोरी पढ़ रहा था कि इनके फादर, चूँकि ये इनकी गांव की कहानी थी और इनकी स्टोरी को जब मैं पढ़ा तो बड़े अच्छे इन्होंने दिखा था कि लोग अपने फादर से जनरली क्या होता है, हम इनहेरिट करते हैं चीज़ों को और उनसे कहते हैं कि पापा आप ये ला करके दे दीजिए। इनकी स्टोरी छपी थी कि इन्होंने अपने फादर को जब ये जैगुआर गिफ्ट किया था तो दैट टाइम इन्होंने अपनी मेहनत से अर्न करके उसको किया था। सो दैट्स वे आई कॉल्ड हिम। आई जस्ट वांट कि इस तरह की इंस्पिरेशंस आपको बहुत एक मोटिवेशन लेवल पे लेके जाती है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार या गवर्नमेंट या NGO हों या फिर आप एक कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं तो ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर अप कर सकते हैं। सो दिस इज़ विथ हिम। आई हैव प्रोफेसर रोबिन दत्ता, Dean and Head of Department Chemical and Science Department, Tejpur University. Okay. So he has requested कि sorry आप मुझे नहीं करें। I have also Mr. Neeraj Devangan. Please you can join. He is from the Foundation of Ecological Security Affairs. I have my friend also, Hans Egor, owner and director at Linensio. He especially came from Denmark and we got an opportunity to invite him for this conference and he has accepted our this. And let me just introduce to myself because I have to do it. So I'm not your anchor. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो और लास्ट मोमेंट आपका एंकर कहे कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल से नहीं आऊँगा, तो आपको एंकरिंग करनी पड़ती है। ओके, सो बाय प्रोफेशन आई एम बेसिकली एन एनवायरमेंटलिस्ट. आई स्टडीड फ्रॉम IIT Delhi as well as from IIM Kozhikode. I am basically working in this sectors, especially जब हम कहते हैं कि पंचभूता एलिमेंट, हमारे शरीर जो 5 एलिमेंट से बना है, चाहे वो वाटर है, चाहे एयर है, चाहे सॉइल है, चाहे स्पेस है, एंड सारे. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क. आई एम बेसिकली अ प्रोग्राम एनालिस्ट वर्किंग विद द वेरियस ministries and departments and presently heading that a center of excellence initiatives by All India Institute of Local Self-Government. And this is my background and profile. So now I will start discussing on that. It is moreover, I know it's a presentation which it's my speakers and my co-colleagues are going to give this. So I will start with, I can say with the Dr. Vishwavandita. So you want? Okay. So Dr. Vishwavandita is the Dean with KIT University and she has invented her new concept called the water percolating bricks. इसके बारे में ज़्यादा यही बताएंगी. So let me just now handle it. Please. Thanks, Swag. You get them. So, good afternoon, everybody. Myself, Vishwavandita. I welcome all of you. This particular research is regarding formulation of a concrete material through which water can percolate. Nowadays, everywhere we are seeing huge quantity of modernization
concretization, due to which the rainwater, it is becoming difficult in part of the rainwater to reach the soil. And the ultimate result is the water level is slowly getting depleted. And the issue has arisen almost in 34 different cities in India. And where I am staying, Bhubaneswar is one of it. When I joined my university in 2005, the water, means groundwater was available within 14 feet. And last year's scenario, we digged up to 560 feet, still water is not available. Everywhere, this is the situation in India. So keeping that one in mind, we have developed a kind of concrete. This is the general scenario, the water retention, water logging. And this is the condition of the city where I am staying. And if you see, sir, this is the groundwater exploration limit. It is being shown, and Orissa, it is having 40.7%. So this is the concrete which is made up of fly ash. Fly ash is generally being released from the thermal power plants where this coal is being burnt and ash is being liberated. That ash we have taken into consideration, some admixtures and different chemical treatments we have done onto that, so that that particular fly ash get converted into geolite form. Geolite means the simple candle filter which you are using for drinking water, and that geolitic material, we have converted that one into small pellets. And after converting that one to small pellets, then we have constructed concrete structure out of that. It is in the form of bricks, or it can be made in the form of slabs and all, which can be implemented on the roads so that directly rainwater can enter into the soil. And from the ministry, we have got facilities to carry on more on this. And the unique feature of this particular one is whenever any water enters into it, it slowly makes the water clear in respect of chemical and physical. Not exactly on biological, but physical and chemical parameters are being taken care by this particular concrete. And if we compare this concrete with the general paper materials which are being used in these roads, so it is a lightweight material having a very high strength, and water holding capacity is normally in the range, and it can be implemented everywhere where there is a need of water percolation, and the porosity gradually decrease when the curing period becomes more. And these are the materials which we have prepared. I'll directly come to this. This is the material which, when will be implemented on the road, directly rainwater can enter into the soil. And in this aspect, we are having our patent and copyright. And fortunately, government of Orissa has allowed us to make road out of this concrete, for which different parking slots and all we have prepared, in which earlier there was huge water logging, and nowadays those areas are becoming free of water, and this skidding and all issues are getting diluted slowly. The cost parameter is very nominal, we have carried out. And taking that one into consideration, we have constructed some roads also, which are water percolating roads. And by the roadside, we have made some chamber like this, where the water which comes from the percolating material, they were directly being poured into the groundwater level. Thank you. I don't want to take much of time, and we can discuss in case anyone is in need. Thank you. That's so quickly. So now I will request once again Sahiti. Okay, so she can.
Hello, everyone. Thank you so much for giving me this opportunity to be part of this wonderful, wonderful International Water Conference. And although I would say I'm not very directly proportional to the stalwarts and the industry experts who are speaking about different inventions and the depth of the technology and the research that goes into making an impact in space of water. I am Sahiti, and I run a foundation called Soul of Swadesh. And our vision is to go to the grassroots. I have been to more than 150 villages. And what I do is I go and live with the communities, understand the value chain, the farm to fork of more than 30 to 40 supply chains like brick making, broom making, weaving, mango jelly, cashew nut, bamboo, hemp, and so many different skills. Like there are thousands of skills which are residing in the grassroots of India. So what we do is we go there, we do a need assessment of the value chain and the supply chain of all these different crafts, and then we create tailor-made solutions, starting from making documentaries to create awareness, to inspire local role models. I had a presentation and a video, but there was an internet glitch, and because of which I could not put that up, so I just took some notes. So the main impact, what I realized in going to all these 150 villages, and as of now, as I mentioned you, we've covered more than 35 supply chains. The common thread which binds all of us is water. And the first and the foremost thing which, when I went to Auroville, somebody told me that the human body, our emotions are directly proportional and they act exactly like the ocean. So one of the most successful models that I've ever come across who have been working in the rainwater harvesting, grey water recycling, groundwater recharge, etc., is Auroville. So whoever, Auroville is a great prototype to go and study and live the water conservation system. So as a storyteller, my job is to bring the stories and to trigger the emotion of all the individuals by bringing different stories in the area of water and sustainability. And as the National Brand Ambassador for Sustainable Development Goals from MSME, it is also one of my mandates to create and localize the Sustainable Development Goals. Whatever the goal it might be, whether it is hunger, health, tourism, responsible production, creating sustainable communities, climate change, life on land, life underwater, gender, and of course water. So each and every goal, each and every craft, each and every supply chain is directly proportional to water. Everything depends on the availability of water, the scarcity of water, the usage of water, and how we navigate through the water. I was born in the Godavari region in West Godavari district of Andhra Pradesh. And being from there, where there is excess water, and when I go back after 32 years to the same area, the same West Godavari district, there was a Google report that says, I was working with a non-profit organization there, and they are particularly working on a problem statement which says that the heavy metal composition in the fish of Godavari has increased by more than 10% in the last 20 years. So it is, water is integrated into agriculture, into our lives. It's there in the birth. It's the most crucial part of the economy. We celebrate through it. Our festivals go through it. And it is also it is one of the major aspects and elements in creating and promoting the economy at the rural, and not just the urban, but mainly the rural economies are directly dependent on water. So the impact of water, and especially in the times where we are all
dividing ourselves on the basis of, it could be landscape, religion, belief systems, and so many frameworks and ideologies that divide us. Water unites us. Water is the universal element of unification, and water has no religion, and hence it has an impactful power to touch our souls. So as Soul of Swadesh, here I am creating stories of water and on all the levels that the water is reaching, and involving young people and different innovations and different solutions that have come in the space of water. We bring them out for all of you to, and as we know that there is so much of innovation and solutions that are coming in the space of water, the stories which we are creating will help in inspiring the replication. We know that we are moving towards 150 crore population. So imagine if there are thousands and lakhs of innovations and solutions that are coming out. We need stories to be told regionally, locally, and in a way that can inspire replication and action. And awareness about water bodies, the personalities who are creating solutions, and the successful restoration models that, for example, the ones we have heard about today, I haven't heard it much. So the noise and the stories of water is what we bring. We create aqua role models and we regionally bring them out. And also, there are a lot of stories of aquaculture and fishermen and how their lives are impacted due to climate change. So I'm not going very deep into it. And I want to close down by giving one very special example, which in my personal experience has really impacted me, is in a country like India, innovation and solution need not just be adding a lot of complication or technology. Sometimes it could be elimination of technology or understanding our local communities. As we have different geographies, different factors that impact us, we need to actually go and understand the local communities to give tailor-made solutions. So one of such solutions which I read about is tank company. They create tanks, and one of the ways they could resolve the problem of villages where people have to walk for more than 10 to 15 kilometers, even in 2024, to get, a pot of water back home. So this company has created huge tanks with four wheels. So the 4 wheels under the tank could enable one person to get the water for more than 3 to 4 homes, and which they can use. So sometimes, the stories and solutions could be as simple as this, which could impact crores and millions of lives. Thank you so much. So each and every day I got an opportunity to read her story. So whenever she writes, I always the first one who like the post and read it, and it's really inspiring. Okay, so I'm changing the orders because I don't follow the orders, so that's the reason I'm just changing all these things. So now I will request. Sorry, I cannot pronounce your full name. It's like Hans and Gore. Okay, please come, and so you can. You can have a case then you. This one. Wait. Good afternoon, everyone. And thank you very much for inviting me. I come from Northern Europe. I come from Denmark. It's a little embarrassing to say it's not much bigger than, let's say, the suburb of Delhi. But that's what it is. What we say in Europe is that we see that this is India's moment.
I think now I have also realized this is Chhattisgarh's moment. I think Professor Kundu also said it earlier today. It's really, really nice. It's really, really fantastic to see such a well-organized program from the district here. So thank you very much. I will go through these different points. I hope my animation will work when we come to that. Basically, I have 3 things I want you to remember, the 3 M's. We come to that. And then also the Sigalium principles. I myself is a water expert. I work a lot with water supply in India, in Nepal, in Bangladesh, in Sri Lanka, and of course in Northern Europe. I work a lot with World Bank as well as Asian Development Bank. So if I go to the next slide, I'll not go too much into this. I'll just say this is India's moment. And also what I would also like to mention is what I think Professor Mitra from IIT Guwahati said a little earlier. I mean, if we talk about development of sustainability in water management, going from developing countries to developed countries, it's maybe better to go from developing countries to developed, or was it? Sustainable infrastructure. Yeah. Climate-friendly development. He's absolutely right. Don't copy what we have done in Europe. Sometimes we call it end-of-pipe innovation because we're stuck with what we have, so we can only improve it a bit. There's so much potential in India to do innovation. So you do it your own way. And I would like also to tell about my learnings in this respect. So if we go to the next one. Oh, that's me. Oh, I have to do that. Yeah, 2 seconds. So, This slide, this animation has been made over many projects. I added 1 dot every time. So what you see here is flow of water. So this is one example of a water supply project. What you cannot see because it's behind the chairs. But actually we're talking about 3 different levels. Here at the right side, this is typically state business. This is about securing the bigger intakes or reservoirs or whatever it can be. And then in the middle, that is typically district business about making some multi-city water supply schemes. And what we see on the left side is local business. That is about the Gram Panchayat, that's about the ULBs. It could also be irrigation schemes with the WA. And what I want also to demonstrate here is the strength of digital solutions. This is one example where India can bypass whatever is done elsewhere because there is so much expertise in IT. So how to utilize that in the best way. Another thing here is you need to cross-cut from state to district to local urban bodies or rural bodies and to each citizen. And the way back again is a 2-way communication. So going across is very difficult, but also in the other way between the different sectors, between domestic water supply, between agriculture, between industry. Also there you need to share data. This is extremely complicated. And this is what I've been working with in many years. What I should also mention here, this is about the first M. This is about monitoring. You need to understand what is going on. And that is why you have these different sensors. You have GIS systems, you have even remote sensing, satellite technology, and a lot of other technologies. Drones are coming in big way also. How to integrate this. So this is about the first M, the monitoring. Let's go to the next M, that is management. You cannot do management if you don't know what to improve. So therefore you do the monitoring.
on the other way, don't start any monitoring if you don't have any need for the data. I've seen so many cases where people that start monitoring projects, but it's not being picked up because it's not going to be used. So what is management? In this case, this is from a particular project. This was about combined use of surface water and groundwater for water supply. And the thing here, it was also mentioned earlier, in the monsoon you have abundance of water. And in the wintertime, in the summertime, you have scarcity of water. So how to best manage water? This is a question here. Reservoirs is an obvious choice. It could also be to save some of the groundwater during the monsoon. Use the surface water where you have it, when you have it, and then only take groundwater during the summertime. There are so many aspects of management, but not just for the single user, but also across. So how to share the water between industry, between agriculture. Agriculture, the irrigation is by far the biggest user, and then the domestic water supply also. So this is about management. Management is also about policies, how to develop policies, regulations. Management is also how to make sure what decisions being taken at the state level is relevant at district level, is relevant in the Grand Panchayat, which is relevant in the villages, and the other way around. So there's a lot of complexity in management. So that's a big discipline. The last part is making, because I need to find the 3 M's. So the last M is making. So what I mean by making are the hard structures. It could be, in this case, a reservoir. And here it's relevant to think about nature-based solutions. So how to utilize abandoned river channels, or maybe wetlands, or maybe floodplains, which will be flooded in any way during the monsoon. How can you save that water for later use? So that was another project. So here I have summarized the 3 M's: monitoring, management, making, and they're all equally important. And they support each other at different levels. Here I've just mentioned 3 levels: the local level, district level, state level. So when we do big projects, big infrastructure projects, it has to be a broad range of solutions from all levels, from all different M's, because otherwise it will not be sustainable. And this is how you achieve efficiency. Then I just want to mention about the last thing here about the Sigalium principles. This is something I have learned working many years in Denmark, and I see a lot of the similar things in India, so I think it's good to remember. So Sigalium is SI for silos, GA for gaps, LE for leadership, OM for operational maintenance. Silos is between the different sectors, represented typically by the different state departments. Are all the state departments involved in the water planning? Not always. But is it relevant for most state departments? Definitely. Gaps. The gaps here, I'm talking about the gaps from the different levels. In Europe, we have the European Union, and then we have the states like Denmark, and then we have the municipalities. Here it's similar. We have the central government, and we have the state government, and then we have the district, and then we have the local bodies. So how to make sure that the gaps are being closed and the projects are relevant at all levels. LE for leadership. I think the initiative taken by the district collector here is fantastic. This shows great leadership. And you just see how happy we all are to be here. And the thing is, it matters. People driving the things. So the challenge here is often succession. We see that in bigger projects, which will last 10, 15 years. There's some of the very good people in government. They are maybe being replaced every 3 years. But how to make sure there is a succession? How to make sure there is another district collector here next time who is equally visionary? OM
OM is about operation and maintenance. And here it's really about securing resources. Financing. I've seen so many projects which are great, fantastic. After 5 years where they should be in operation, they're not being properly maintained because all the good people, they have left for new projects, or there are no funding. And I tell you, it's the same thing all over, at least where I come, also in Europe. So that was basically my story: monitoring, management and making, and then the Sigelium, silos, gaps, leadership and operation and barriers. So there are many challenges, but there are also a lot of opportunities. And I am really looking forward to see India and Chhattisgarh develop towards the climate-friendly development. Thank you very much. So I will ask you to join. Okay. So perfectly okay. So Mr. Neeraj Devangan. Okay. Listen, within 5 minutes. Sit. Well, sir, thanks, sorry. Much. Vijay Jain, who am sit. इतना टाइम हुआ है कि दो लोग वर्क हैं आप फिर 4 बजे पॉइंट कर दीजिए 4 मिनट में ये हाँ बस चला। आप सभी को नमस्कार। मैं नीरज देवांगन हूँ और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी FES संस्था से हूँ। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बेसिकली इकोलॉजी रिस्टोरेशन पे, फॉरेस्ट पे, जल जंगल ज़मीन पे काम करती है ताकि सभी लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर पाएँ और ज़मीन और जंगल और अपने कॉमन रिसोर्सेज को, जिसको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, उसको भी बचा पाएँ। तो हमारा जो बेसिक कोर मॉडल है जिसके बेस पे हम काम करते हैं कि अगर हम सुबह से हम बहुत सारा बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी कैसे काम करता है, जो पानी का बचत है या जो ज़मीन है या जो एनवायरनमेंट है उसको कौन बचाता है, तो अल्टीमेटली वो नीचे कम्युनिटी के पास जाता है। तो कम्युनिटी के पास जब वो रिसोर्सेज होगा, जब उनके पास वो अधिकार होगा अपने ज़मीन पे काम करने का, तो पहला ज़मीन पे जब अधिकार होता है फिर उनके पास में एक भावना होनी चाहिए, भावना जो ऑलरेडी है उनके पास में, तो उस भावना को लेके वो काम करते हैं और उसके पे एक्सेस उसको मैनेज करते हैं। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इकोलॉजिकल हेल्थ जिससे बढ़ता है और सब लोग अपना लाइवलीहुड भी उस जगह पे जो रहने वाले लोग हैं, उस रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले, वो उसको अच्छे तरीके से अपना लाइवलीहुड भी देख सकते हैं। जैसा कि अभी सुबह से हम यही देख रहे हैं कि हमारे देश में पानी का स्केर्सिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि पानी को हम नीले कलर से दिखाते हैं लेकिन यहाँ पे आप लाल लाल दिख रहा है सब जगह पे। तो पानी बहुत ज़्यादा कम है ऐसा भी नहीं है। अभी हम ये फील नहीं कर रहे कि हमारे पास पानी कम है, लेकिन अगर अंडरलाइन कॉज को देखेंगे तो पानी का मैनेजमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं पे। तो जो कोर प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा हम पानी निकाल ले रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, या तो कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वहाँ तक पानी पहुँच नहीं रहा है। जैसे पिछले कुछ स्पीकर्स ने कहा कि कुछ ज़्यादा किलोमीटर से भी एक एक बूंद, एक एक घड़ा पानी लाना पड़ रहा है। तो उनको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है पानी का। जबकि पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि हम सरफेस वाटर पे ज़्यादा ध्यान दिया है हम लोगों ने, कि अगर पानी का ज़रूरत है तो हम क्या किए हैं कि बड़े बड़े डैम बना लिए हैं या फिर तालाब खुदवा दिए हैं, लेकिन उस पानी को बचाने के लिए या ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा काम हम उस लेवल पे नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड सप्लाई साइड पे काम किया कि पानी का ज़रूरत है, हम डैम क्रिएट कर देते हैं। और ज़्यादातर रिसर्च ये बताते हैं कि जो उस जगह पे रहते हैं, जैसे जो गांव पे अगर हम रह रहे हैं जहाँ पे हैं, तो वो लोग अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बकाए वो लोग कि हम शहर से जाके उनको सिखाएं कि वो अपने पानी को कैसे मैनेज करेंगे, अपने ज़मीन को कैसे मैनेज करेंगे। अभी हम सब लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग शहर के रहने वाले हैं,
और अब हम चर्चा कर रहे हैं पानी बचाने की, और पानी कौन बचाएगा? गांव का व्यक्ति। और यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे हॉल में 10 से 15 लोग ही गांव के लोग होंगे, बाकी हम सारे लोग शहर के लोग हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए ऐसे फोरम पे, जहाँ पे उनकी बात डायरेक्ट हो सके हमारे जैसे लोगों के साथ, चाहे वो रिसर्चर हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको वैसा फोरम क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हम सिर्फ बात ना करें, एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बात करें। तो हमारा जो अगला डेस्टिनेशन होना चाहिए, किसी गांव में जाके ऐसा चर्चा किया जाए कि एक्चुअल हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारा फोटो दिख रहा है, वो गांव पे उस जगह पे कैसा दिखता है। तो एक वर्ड आता है अंग्रेजी में कॉमनिंग। कॉमनिंग मतलब सामुदायिकता, जो कि हमारे पहले से बेसिक कल्चर में रहा है कि हम अकेले खुश नहीं होते हैं, हम त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम सामुदायिक रूप से खुश होना सीखते हैं, अकेले में हम खुश नहीं होते हैं। तो हम बड़ा बड़ा त्यौहार मना रही है, जल जगार महोत्सव कर रहे हैं, कोई अकेले में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे लोग साथ में हैं तो हमको एक खुशी की भावना आती है। तो वैसे ही कॉमनिंग में हम जब कुछ रिसोर्सेज को सामुदायिक रूप से उपयोग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब हम उसको बचाने के बारे में या उसको अच्छे से यूज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। और पानी, ये पानी हो गया या लैंड हो गया या कोई भी रिसोर्स हो गया या हवा हो गया, तो ये आप इंडिविजुअल लेवल, एक गांव के लेवल पे देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं हमको मिल पाएगा। तो हमको एक बड़े व्यापक पैमाने पे, जिसको हम लैंडस्केप लेवल पे भी बोल सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक गांव से बात करने की ज़रूरत नहीं है, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। सबका प्रॉब्लम सुन के एक कॉमन फ्रेम पे पहुंचने की ज़रूरत है हमको। तो ये सब बात कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ क्या ऐसा नहीं है कि नॉलेज नीचे पे नहीं है, पहले से ट्रेडिशनल नॉलेज गांव वालों के पास पहले से है। जैसे आदिवासियों के पास पहले से बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो अपने जंगल को पहले से मैनेज करते आ रहे हैं, पानी को मैनेज कर रहे हैं। तो अब शहर वालों को क्या हो रहा है, क्या ज़रूरत पड़ रही है कि यूनिवर्सिटीज़ से एक्सपर्ट्स आके नीचे बता पा रहे हैं, जो कि पहले से सदियों से खुद मैनेज कर रहे हैं, और हम तो 4 साल 5 साल से पढ़ के उनको बताने जा रहे हैं। तो क्या ऐसा हकीकत है क्या? नहीं, उनके पास नॉलेज है, बस उनको वो आत्मसम्मान याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो सदियों से जो मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बेसिस पे हमारा खुद का एक टूल है, क्लार्ट बोल के, कंपोजिट लैंड असेसमेंट एंड रिस्टोरेशन टूल, जिसके बेसिस पे जैसा आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जिसको किसी को बताना नहीं पड़ता है, तो वो एक गाँव वाला व्यक्ति भी, आप अगर प्ले स्टोर पर जाते हैं तो बहुत सारे कैटेगरीज जो कॉम्बिनेशन है, स्लोप्स कितना है, पानी कितना गिर रहा है, ज़मीन पे पत्थर की मिट्टी की क्या स्थिति है, उसके बेसिस पे वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है लैंड को, और आपको बताता है कि आपका पानी जो ज़मीन है वो रिचार्ज जोन में आता है या सरफेस वाटर पे है। तो आप जब नरेगा के स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप उसको देख के कम्युनिटी वाला एक व्यक्ति उसको प्लान कर सकता है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कोई और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पीछे एग्जीबिशन हॉल में क्लार्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। धन्यवाद। सॉरी, मैं लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट थोड़ी मेरी भी लिमिटेशंस है। सो आई विल जस्ट टेक वन लास्ट एडवांटेज, प्लीज प्रोफेसर, इफ यू अलाउ। ओके, एंड दैट्स राइट। सो प्लीज I will take my note. Good evening, everyone. Thank you for the opportunity given. Let me start with a positive quote. डर के आगे जीत है. And sometimes regret may be opportunity. So ये दोनों मेरा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट कोट्स है. फर्स्ट वन इज माउंटेन ड्यू का एड का कोट है, विच वॉज वेरी इम्प्रेसिव. द सेकेंड वन विच आई क्रिएटेड. मेरा ये स्टोरी मतलब काफ़ी विलेज बॉय का एक स्टोरी है. सो I will take 2 to 3 minutes to describe how I came into this level. मैं एक 12th क्लास में एक 6 times फेल हो गया एक ही सब्जेक्ट में. मेरा घर में जब भी फीस के लिए जाएंगे, मेरा फादर बोल रहा था आपका फीस भी वेस्ट है, आप कुछ पढ़ने वाला नहीं है.
So that was my situation in my school days. And मैं तो लास्ट बेंच का आदमी है, मेरा ना रिकग्निशन स्कूल में नहीं है, घर में नहीं है, गांव में नहीं है, मेरा नाम किसको भी मालूम नहीं है. एंड मैं बहुत इंट्रोवर्ट का आदमी था वो टाइम पे. सो दैट इज़ हाउ माई चाइल्डहुड वॉज गॉन थ्रू. ऐसा सिचुएशन में सम हाउ मेरा एजुकेशन का मतलब फेल होने के बाद I got some frustrated with because my classmates are studying upper classes and I was still writing the same exams. So वो situation में मेरे को ऐसा लगा कैसा भी ये पास होना चाहिए. And then somehow I passed that exam 12th class and I requested my parents to join for further studies. Like that, after that I made a 2 years diploma course, automobile engineering technician. वो डिप्लोमा में मेरे को एजुकेशन का बारे में बहुत इंटरेस्ट आके मैं 74% में पास हो गया. वो 74% आने के बाद आई कैरिड माई ऑल सर्टिफिकेट्स एंड ट्राइड ईच एंड एवरी शोरूम इन बैंगलोर. सो दैट वाज माय नियरेस्ट सिटी. नोबडी ऑफर्ड मी ए जॉब. मेरे को वापस घर जाने को भी इच्छा नहीं था बिकॉज मेरा फादर एंड मदर दे आर वेरी मतलब बिकेम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली. मेरा मदर बैंगलोर जाने का पहले 10 रुपये का एक छोटा बंडल दिया था. सो बाकी जो भी पैसा आप अर्न करना पड़ेगा. सो ऐसा सिचुएशन में मैं एक कार वॉशिंग शोरूम में रिक्वेस्ट किया कोई ना कोई जॉब दे दो, आई विल डू इट. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई करियर एज ए कार वॉशर फॉर 400 रुपीज़ माई फर्स्ट सैलरी. सो वो दिन मैं सीखा था कोई भी काम हम लोग दिल से करेंगे दैट विल बी द बेस्ट आउटकम. सो इवन टुडे इफ आई एम इनटू द बिजनेस, मैं आज भी वही सोचता हूँ कोई भी अगर आज भी मेरे को एक कार दिएंगे ना, मेरा जैसा वर्ल्ड में कोई भी ऐसा वॉश नहीं कर सकते उतना अच्छा से कर सकते मैं. मतलब आई पुट ऑल माई पैशन, हार्ड वर्क, एवरीथिंग टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब. सो like that I was like searching for मेरा वो जो 400 रुपीज़ मेरा ना घर भेज रहे ना मेरे को एडजस्ट नहीं हो रहा था. somehow I get into marketing job which was I totally not interested to do marketing job. ऐसा एक 10-12 years marketing में होने के बाद ये corporate level का वो targets achievement वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था. so I don't want to continue my job and I want to do something on my own. वो इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया मैं कुछ ना कुछ पानी पूरी शॉप भी ओपन कर देंगे बट आई डोंट वांट टू डू दैट जॉब. वो एक 20,000 सैलरी भी आ रहा था वो टाइम पे. मैं शादी हुआ, आई रिजाइन माई जॉब एंड आई हैव टेकन दैट पीएफ अमाउंट. इसमें से थोड़ा बहुत कोई दोस्त बोला था आप इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में आपका अच्छा पैसा आएगा. वो पैसा पूरा 1 वीक में निकल गया. सो विथ 1,27,000 I started one small company, water purifier company. वो उसका नाम भी aqua pot बोल के मैं नामकरण किया था, इसीलिए वो पहले पानी पॉट में कैरी किया था एंशिएंट में. That is how I started my water purifier company. After that, not only commercially, I personally totally I need to give something to the society बोल के I innovated 4 to 5 models of solar powered water purifier and I taken to Delhi Ministry of Drinking Water and Sanitation. I have displayed in many places. Somehow it didn't work out commercially. After that, I adopted few schools and I gifted those solar powered water purifiers to the school. So that is how I started my career. बाद में मेरे को ऐसा लगा the rural people, I need to educate rural people and to come into the business because business ये क्या है, there should be something like everybody want to do job but not a business. So ये चीज़ में मैं थोड़ी लोगों को थोड़ा मेरा स्टोरी बता के ऐसा ऐसा करके आज तक मेरा पूरा साउथ इंडिया में एक 20+ RO स्टोर्स में इन्वेस्टमेंट करके मैं ओपन किया. इट इज़ रनिंग अराउंड मोर देन 20 cities very successfully and today our turnover is crossing 100 crores this year. So I am very happy to share my story. मैं इसीलिए मेरा स्टोरी
बोलना चाहता हूँ, आई एम ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर a normal guy who can who can achieve something on their own. मेरा ये 14-15 years journey में मेरे को बहुत I know that I don't have money, but I personally adopted few things like 6 years initially I have not even taken a single leave to my office. That is how I worked out for a company, and today it is one of the leading company in India into water purifiers. And I am also doing some research because water purifier बोलेंगे ना, it is something like you are wasting lot of water बोल के people assumption है. So we are working on like 75% recovery and 25% rejection in RO water. So we are educating our customers to invest 10 to 12% more so that they can get a maximum output, and we can save the nature by sending the wastewater into the ground. So in that case, we are working on 8 पानी हवा से पानी, वो भी प्रोजेक्ट में हम लोग थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं. And I think within 2 years, my company will be spreaded all over India. So this is about my story. Thank you. Hello. And when I started my business, मेरा father बोल रहा था, you can't do this water business. मैं को आपका जहाँ तक भी दिखा दिया, you can't, you don't even try it. So मेरे को वो याद आया था, like डर के आगे जीता. मैं I told my father, no need to pay anything. I don't want your money. I will start, because even my parents don't have money. Later on, like 6 years back, my father is a farmer. He don't know driving, but still I gifted a brand new Jaguar car. It is almost 6 years हो गया, but still it is not even running 10,000 kilometers. But still I am very happy that I done something for my parents. Thank you. So those who believe that पानी सिर्फ एक कहानी है, तो ये सच नहीं है. पानी एक बिजनेस भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है. इसी के साथ इस पूरे डे का एक लास्ट प्रेजेंटेशन है, एंड आई रिक्वेस्ट यू प्रोफेसर सर तेजपुर से आए हैं. Yes. So it was nice to listen to so many good speakers, including last one, Mr. Balakrishna. And also I feel good to speak as the last speaker. Recently I conducted one national seminar in collaboration with INSA. There also my talk was the last talk. It's good. You see how many people are really interested there. So I want to speak about a filter for fluoride removal. This is a kind of do-it-yourself filter. You can do it you can make it at home, and it's a kind of rural technology. It was nice to see the filter being exhibited here, right at my back in the other side, by Samarthan, an NGO who works in MP and Chhattisgarh. And it's also nice to see my presentation. Where is it? Robin Datta, fluoride, yes. Yes. It's coming? No. No. Well, probably it won't come. But no. It's okay, leave it. Can I connect my laptop? Please bring my laptop, yes. I'm sorry, it's not coming here. It's going here? Yeah. What? Just take it away.
Let's take a attempt here. Why is it not coming? It's coming, yeah. There it is coming, but not here. Okay, so let me start with a small story. We developed this filter, we got it patented. Then we went for a field trial in a neighboring district in Assam, neighboring district to Tezpur University actually. It was in Karbi Anglong. There are a lot of fluorosis people, affected people. Based to actually, they did not have fluorosis by that time in 2013 when we approached them. We were installing some filters near to their residence, and then told them that your water, we have tested your water, it has 6 ppm of fluoride, and even if you do not have any fluorosis, of course already their children were affected by dental fluorosis, you will soon be affected by skeletal fluorosis. They did not care it. And after 6 years, their elder daughter called me one day that, "Sir, are you coming to this side? We are ready with all the materials for making the filter. Please make it for us one day." So we went. By that time, actually, this man, he is Nawar, Mr. Nawar, Nirmal Nawar. He actually got some kind of pain in the joints. So he cannot walk properly. And this lady, his wife, she got this Bow syndrome already. She cannot move his backbone and neck also. So we made it at that time. So this is the filter. This is a filter, fluoride. We call it fluoride nilogon filter. Fluoride nilogon is actually an Assamese word. It is for removal. Actually, we read lot of European terms and terminologies, Greek, French, German, English, and I thought let us send one Assamese word worldwide, and it has already reached Europe, Asia, Europe, and America also. So, these are some, forget about it. So we made a filter actually because there were a lot of fluorosis affected people there, and I saw no way out for them in the near future. It was in 1999 actually, it came to light that people are affected by fluorosis, and so we started, and it was very difficult to find a very low cost method. Costly methods are there, but even then, even though they are costly, they are not effective. RO can be used, but I should not say anything against RO in front of people like him. But I will only say one thing, that in 2019, I think it was some date in the month of May, National Green Tribunal had advised the government to ban RO in all the areas where the TDS of water is less than 500 ppm. So if that is implemented, no water in Bihar, UP, Assam, and West Bengal it can be treated, can be purified by using RO, because their TDS is very low. There in Assam, TDS is between 100 and 150. Anyway, so we developed a filter for which we borrowed the tricks from the nature, how fluoride affects our bone and tooth. They affect, actually, hydroxyapatite is the strongest adsorbent of fluoride. It is the main component of tooth enamel and bone, so it absorbs fluoride and gets affected. So we use this same technique for removing fluoride from water. We take some water, actually this is the green drum you can see, there we have some crushed limestone. It's very cheap material, it is as cheap as your construction chips, stones. So
So for making a filter like this with 40 liter drum, that gives you 15 liter of pore size, pore volume. That means you can purify 15 liter of water. There you need limestone of say 100 rupees or so. That's the cost of limestone. Then we add little bit of phosphoric acid, very little. It is in chemical units, it is 0.68 millimolar. In terms of price, it will come half a paisa per liter, half a paisa per liter. Yes, half a paisa. So in the drum or in the container of water, this limestone and phosphoric acid, they precipitate fluoride as fluoroapatite and calcium fluoride and make lot of hydroxyapatite. Hydroxyapatite formation will be 1,000 times more than fluoroapatite. And then actually within 4 minutes, the fluoride level, whatever it is the initial fluoride level, it doesn't matter, 20, it be it 20 or say be it 3 ppm, it will come to 2, less than 2 within 4 minutes because of the precipitation. Because precipitation is fast, precipitation is actually instantaneous, but here it takes 4 minutes because the limestone, solid limestone has to be dissolved by this weak acid, phosphoric acid. Then there is no fear about phosphoric acid because it is an edible acid. It is used in several food products as food preservatives, and it is also used for in these soft drinks like Coca-Cola and Pepsi. The sour taste in Pepsi, Coca-Cola we get because of this phosphoric acid only. And most importantly, after the reaction, the water will be neutralized. The phosphoric acid will be totally reacted and neutralized. Okay. So then, along with precipitation, actually within 4 minutes, the water pH, but this water fluoride level will come down to less than 2 ppm, and then this hydroxyapatite is there. It starts absorbing fluoride right from its nucleation, its formation. So then it is absorbed, and you can make the fluoride concentration 0. But we adjust the phosphoric acid concentration so that it doesn't go to 0 because some amount of fluoride is required. So these reactions are there. I think most of the people will not be interested in the reactions. So I skip it. Then let me tell you about the consistency of the filter, because it works in a plug flow batch mode. It's and the limestone surface is always renewed by dissolution by phosphoric acid. It is always new, always fresh. So its performance remains exactly same right from beginning. And till when? Till 50 years, it is as per our estimate, it will work with the same efficiency till 50 years if it is used twice a day. If it is used once in a day, it should work for over a century. Actually, it should be more. So this is something very interesting. Then there is no question of any danger because it's quite safe. pH is settled around 7.5, and the sludge is also quite safe. It is actually till 50 years or 100 years you don't need to worry about the sludge, and then it also already very comfortably passes the US EPA TCLP test, which sets the requirement for landfill dumping. So it can be dumped in landfill also, this sludge. So it is very consistent results. You can see it is same till more than 5 years. Yes. Yeah. Finish it. Let me finish. So I'll just skip. I'll show you some pictures only. Because we have to okay, look, no. So these are some. This is DIY type filter. So you can make it at home. You can see how people make it. So these are some filters existing in Chhattisgarh only.
In Kanker district, you can see this. Okay, they have household filter to nearly 300 household filters are there to my knowledge, and then some schools, and then this type of 1,000 liter water filter or 2,000 liter. I don't know. He will be the Azahar is there. That is for house to house supply. So these are some pictures from Yemen where it has been already implemented for the second phase. One of them is you can see in the right hand side, that is 6,500 or 750 liters piped water supply of this large community water supply, and the others are there are actually total 700 filters plus one community spread into Governorate Laz and Al Dale. So that's all. This is next one is in Odisha. It's okay. So thank you. I'm so sorry about that, Professor. I didn't given you so much of my time to describe more about that, because we have to hand over this now stage to, as our Honorable Chief Minister is coming here. So I would just like to get it facilitated to these, sir. So if we can just facilitate and close the session. I'm sorry I didn't allowing you to ask question and answer. As tomorrow we have the one session, which is the most important one, where we are going to interact with each other. So we are going to discuss in the group discussions, and each and every individuals I would like to invite you to participate in that. So let me just, a possibility, sir. So let's start with the first lady. So Sahiti. Okay. Can somebody take in a picture? Just a minute. Professor Robin Datta. Dr. Vishwavandita Kar. Mr. B.M. Balakrishna, sir. Mr. Neeraj Devangan. And Mr. Hanj. Okay. Thank you. So I'm not going to give even the closing remarks, because I have to hand over that. I just thank you if all of you can come together and we can have one group photographs, and then after I will hand over this stage to district administrations people. So please come forward, sir. Good afternoon. So thank you all. All of you can take seat. You can also enjoy the tea and coffee. We are not breaking this because we have the time limitations, and this is so.
गुड इवनिंग एवरीवन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है और अब से कुछ ही क्षण में वो आपके बीच आप सभी से मुलाकात करने के लिए, आपके साथ ये यादगार पल को चित्रों में कैद करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। तो आप सभी से हमारा आग्रह कि कृपया आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। थोड़ी ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुख्य मंच पर विराजमान होंगे। हमने उनसे आग्रह किया है कि आप सभी विद्वत जनों के साथ वो यहाँ इस क्षण में शामिल हों और हमारा आग्रह स्वीकार कर वो इस मंच की ओर रवाना होंगे। कुछ ही क्षणों में हमारे अतिथि का आगमन होना है, तो आप सभी से हमारा आग्रह कृपया अपने स्थान पर बने रहें। आज एक वैचारिक मंथन में हम सभी शामिल हुए। जल ही जीवन है, कल भी और आज भी और आने वाले कल के लिए भी हम सभी को जल बचाना होगा। आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी जिसमें कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए घड़े में छोटे छोटे कंकड़ डालता है और फिर वो उसमें पानी भरता है। अभी हमें पृथ्वी का घड़ा भरना है और जल को संरक्षित करना है। So, I would request all our delegates and the speakers whose name I am just as announcing here, they can come on a stage, because I just want, all the dignitaries and delegates who came here, we want a photograph session along with our Honorable Chief Minister. So I am naming them, so one by one. First one, Mr. Abhishek Pandey, please come on a stage. Dr. Rakesh Kumar, I think he has already left. Dr. Girija K. Bharat C has already left. Dr. Manoj Kumar, State Lead Pradhan. If you are here, please come on a stage. Please come forward. Mr. Ranjan Panda. Mr. Ranjan Panda, Waterman of Odisha, please come on a stage. Miss Marino, please come on a stage. International that is. Okay, she is going to be there. It's okay. She is going to be. Yes. But उनको बुला लेते हैं. हाँ. Dr. Prabir Kumar Nayak, Regional Director, Central Ground Water Board. Central, आप प्लीज आते सर. Yes, barrister. आते जाइए. अभिषेक, come forward. Dr. Prabir Kumar Nayak, Regional Director, Central Ground Water Board. Dr. Vicky Anand from IIT Jodhpur. Professor Dr. Sudeep Mitra, sir, please come. Dr. Paulini Banerjee, please come on the stage. Mr. William Hallen, I think he has already left for the day. Mr. Jayanta Vijay Singha, please. William. Hank? William is not here. Sahathi De, sorry, I'm still not getting your name. Please come on the stage. Professor Robin Datta, Dean and HOD Chemical Science Department, Tejpur University, Assam. Dr. Vishwavandita Kar, Dean KIIT University. Mr. B.M. Balakrishna, sir, please come on a stage. Mr. Neeraj Devangan, Foundation for Ecological Security, FES. Mr. Hans, please just be seated here. You are on the front row. Some more name is here. Session is definitely tomorrow, but I calling him Dr. Manoj P. Samuel. If you are here, please come. Mr. Ganesh Thorat, Naam Foundation. आ गई. नहीं वो साहित्य दीदी कोई और है, वो बुला लिया मुझे. माई सेल्फ राजीव रंजन, मैं आ जाऊँगा. डॉक्टर आशीष शर्मा, आई थिंक ही इज़ कमिंग टुमारो. मिस्टर नीरज वानखड़े, हाँ, मिस्टर नीरज वानखड़े, प्लीज़ कम.
Amitabh Kundu sir, if you are here, please come on a stage. Amitabh Kundu sir, I think he has already the day. Dr. Partha Boshu, if you are here. Mr. Praveen Bhardwaj, please come on a stage. Mr. Harish Sharma, please come on a stage. Ha. 5 minutes? Okay. Padma Shri Popat Rao Pawar ji, please come take a seat, please. आप फ्रंट रोज में आ जाएं. मैडम को हाँ मैं इधर आगे नीचे भी है. मैडम को सामने कौन सा मैडम कौन मैडम आज दिन पार्टिसिपेट. हाँ इट्स ओके. पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी, प्लीज टेक योर सीट्स. ज़्यादा अच्छा नहीं, वो ऑलरेडी उसमें नाम लिखा हुआ है, सबके लिखे हुए हैं बिकॉज अलग अलग ऑफिशियल्स के हैं. सो देन इट इज़ देयर. सो आई एम सॉरी आई हैव टू डू दिस बिकॉज टाइम नहीं है, तो और मुझे बस ये करने के लिए तो इट विल टेक. तब तक मैं एक फर्स्ट फोटोग्राफ आप लोगों के लिए लेता. ही इज कमिंग विद इन सोस. तो आप तब तक बैठ जाइए इधर. नो प्लीज प्लीज स्टेज वो सारे लोग आप इनके साथ आ रहे. Mr. Vishwanath, sorry, your name was not printed here, so that's why. Please come on stage. विशाल एंड मैं बाद में ज्वाइन कर लेंगे. जल संरक्षण के वैचारिक मंथन में विभिन्न विद्वज्जनों का यहाँ आगमन हुआ. अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि जिन लोगों को आपने सुना है, ऐसे विचारों के बौद्धिक वर्ग के लोग हमारे साथ प्रतिनिधि के रूप में हैं. तो जोरदार तालियां मंचस्थ सभी विद्वानों के लिए. थोड़ी सी प्रतीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की हम कर रहे हैं. उसके बाद एक छाया चित्र यहाँ होगा, ग्रुप फोटोग्राफी. उसके बाद हम यहाँ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम का पूरा मिनट सुनिश्चित है, इसलिए थोड़ा भी विलंब ना हो, हम कार्यक्रम को नियत समय पर कर पाए, इसलिए पूर्व में व्यवस्था की गई है. थोड़ी सी असुविधा आप सभी को हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, पर आशा करते हैं कि इस व्यवस्था में आप सभी हमारा सहयोग करेंगे. जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल जल प्रदान कर सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG को शामिल करना है. इसका उद्देश्य पूरे देश को सार्वभौमिक स्वच्छता प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना कि खुले में कोई शौच ना करे, साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखे और इसमें कोई पीछे ना छूटे. दृश्य स्वच्छता के साथ साथ गाँव में ठोस और तरल कचरे को सुरक्षित रखने की दिशा में ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये वैचारिक मंथन आज आयोजित किया गया. अब से कुछ ही क्षणों में हम इस वर्कशॉप के अंतिम चरण में होंगे और फिर आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे. आपको बता दें कि जिन लोगों ने इस दिशा में अद्भुत कार्य किया है, उनका सम्मान इस मंच पर होना है. साथ ही उन समितियों का भी सम्मान इस मंच पर होना है, जिन्होंने न केवल स्वयं के लिए रोजगार की दिशा निर्धारित की, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दिया. बस थोड़ा सा इंतज़ार और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस मंच पर होगा और आगे की कार्यवाही के लिए हम आगे बढ़ेंगे. अतिथियों का आगमन यहाँ मुख्य द्वार पर हो चुका है. जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं. अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज धमतरी की पावन धरा में एक वैचारिक मंथन हो रहा है जल संरक्षण की दिशा में, जिसमें माननीय अतिथिगण का आगमन हो चुका है. सबसे पहले इस यादगार क्षण को छाया चित्र में कैद करने के लिए हम माननीय अतिथियों से आग्रह करेंगे कि वे ग्रुप फोटोग्राफी के लिए यहाँ मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें. अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच
मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, श्री भोजराज नाग जी, माननीय सांसद श्री अजय चंद्राकर जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक कुरुद, श्री राजीव गुरु जी से आग्रह कि वे छाया चित्र के लिए सभी को व्यवस्थित कर दें। और इस यादगार क्षण को कैमरे पर कैद कर रहे हैं हमारे डेलीगेट्स। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज के इस वैचारिक मंथन में न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी हमारे बीच विशेषज्ञ पधारे हुए हैं। हमारे अपने पद्मश्री विशेषज्ञ जन श्रीलंका, डेनमार्क, यूनिसेफ और जापान से हमारे बीच यहाँ पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है। एक वैचारिक मंथन जो कि यहाँ हो रहा है। हम हृदय से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। माननीय अतिथियों से आग्रह, जल संरक्षण के लिए एक जो जागरूकता मिशन के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे अतिथियों को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साई जी से हमारा आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सविनय आग्रह श्री केदार कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, माननीय सांसद श्री भोजराम नाग जी, पूर्व मंत्री एवं विधायक माननीय श्री अजय चंद्राकर जी, आप सभी से हमारा आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं सविनय आग्रह करूंगी कलेक्टर मैडम श्रीमती नम्रता गांधी जी से कि वे मंचस्थ अतिथियों को कमार के फूल देकर उनका स्वागत करें। पीबीटीजी द्वारा निर्मित ये कमार के फूल प्रतीक है हमारे स्नेह का, तीर कमान का प्रतीक इसमें आपको नजर आएगा। मैं श्री कृष्ण जाधव सर डीएफओ धमतरी को आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। डीएफओ सर से ही पुनः आग्रह, माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी का स्वागत करें। कलेक्टर महोदया सुश्री नम्रता गांधी जी से हमारा आग्रह, श्री टंकराम वर्मा जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी माननीय सांसद महोदया के स्वागत के लिए मैं श्री दीपेश सर से आग्रह करूंगी कि मैम का स्वागत करें। श्री भोजराज नाग जी माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए मैं पुनः दीपेश जी से आग्रह करूंगी सर का स्वागत करें। राजीव गुरु जी AILSG से हमारे बीच हैं। संस्था प्रमुख श्री अजय चंद्राकर जी पूर्व मंत्री एवं विधायक महोदय कुरुद से हमारे बीच हैं। मंचस्थ अतिथि के स्वागत के लिए राजीव जी से हमारा आग्रह। और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं इससे पहले कि आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाऊं आपको बता दूं कि जल शक्ति अभियान जो है इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा होना है। मैं ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी रिमोट का बटन दबाकर इस थीम सॉन्ग का अनावरण करें। जब जल प्रलय आया और पृथ्वी पानी में डूब रही थी, तब विष्णु जी ने अपना पहला अवतार मत्स्य रूप धारण किया और पृथ्वी पर जीवन फिर से बसाया। पहला जीव पानी में पनपा, इसीलिए हमारे लिए पानी बहुत जरूरी है और हमें इसे बचाना चाहिए। आसमां से कुछ मोती गिरे, कुछ तेरे हैं कुछ मेरे, इन मोतियों को देना है अब माला का आकार। जल जगार जल जगार जल जगार।
कुछ बादलों के हिस्से हमने जोड़कर संजो लिए, कुछ मोती बरसे बूंद से हमने पिरो लिए। कुछ बादलों के हिस्से हमने जोड़कर संजो लिए, कुछ मोती बरसे बूंद से हमने पिरो लिए। अब कुदरत के हिस्से आया है इंसानों का प्यार जगा। जोरदार तालियां इस थीम सॉन्ग के लिए। जल कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए ये बताता हमारा ये थीम सॉन्ग। और अब बारी है उन विद्वज्जनों को सुनने की जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार साझा किए, और ये विचार माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम चाहते हैं कि वो रखें। तो सबसे पहला नाम है सुश्री सरस्वती देवी जी, जो कि धमतरी से हैं। ग्रास रूट चैंपियन के नाम से इन्हें लोग जानते हैं और जन संरक्षण के लिए इन्होंने अद्भुत कार्य किया है। मैं सम्मान मंच पर उनके विचार के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। सुश्री सरस्वती देवी जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंच में आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण और जिले के अधिकारीगण, सभी को जय जोहार। मोर नाम सरस्वती ध्रुव हरे और मैं नगरी जंगल पारा के हरो और मैं वन अधिकार कानून बने हैं वो के ओकर सचिव हरो, FRC के सचिव हरो। और आज जो ये पूरा दुनिया में हो थे समस्या जल और जंगल लेके ओमे मोर प्रयास है वो बचाए के मैं प्रयास करे हाँ जे में वन अधिकार कानून बने हैं और ओमे वन संसाधन के अधिकार जो ग्राम सभा में मिले हैं और वो ग्राम सभा के तहत में ग्राम सभा के साथ में जंगल बचाए के प्रयास करें जे में जंगल से नाला निकलते वो में पानी ला रोके पर श्रमदान से ग्राम सभा के साथ में बोल्डर चेक बनाए के काम करें। दूसरा बात है जंगल और पानी बचाए व पौधारोपण के बात करें। तीसरा बात है कि आग से बचे। ये सब चीज़ बचाना बहुत जरूरी है, काबर कि ये सब बची तभी लोगन के जिंदगी बच सकते। और साथ में आज हम जैसे देखा था मोर बचपना जैसे गुजरी पूरा जंगल से आश्रित रही से और जिंदगी जंगल से बीती सावे वहाँ काज से, मगर हम धीरे धीरे आज के परिस्थिति में देखा था कि जंगल खत्म होते जाते, पानी के कमी पड़ते जाते और एक सीधा असर बड़े आदमी ला तो नहीं पड़े मगर जे हमारा असन जंगल में रहोया आदमी वाला बहुत पड़ते है ना, काबर के हमार जीविका खत्म होते जाते। लेकिन हम 2-3 साल से देखें कि हम अपन क्षेत्र में जंगल बचाए के काम करे हैं। आज वो जंगल में कोसा कथे और कुकुन घलो कथे वो उत्पादन है अपने आप बढ़ा थे जब बहुत साल से खत्म हो गई से वो गाँव वालों से बात करें पता चलते कि वो 82-83 में हो रही से जब 82-83 के परिस्थिति ला आज जंगल रख के हम फिर से वो जगह में लाए हैं। दूसरा बात है कि हमने जो जगह में हाँ वो स्थान है महानदी निकले है ना, जहाँ के जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात है कि वो छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी नदी हरे, अगर वहाँ के जंगल डिस्टर्ब होई या कोई दिक्कत होई तो वो पूरा छत्तीसगढ़ ही परेशानी के सामना करेला लगी है ना। तो ये सब चीज़ है और हम आज जंगल और जल नहीं बचाबो तो हमारे आने वाला पीढ़ी है जो 2-3 साल चली ना वो 50 साल में ही खत्म हो जाए। तो हमारा आज मिल के जल और जंगल बचाए के चाहे सब सरकार के व्यक्ति हो समुदाय के व्यक्ति हो बोला हमारा प्रयास करना चाहिए। और यही मोर प्रयास के चलते मोला 2 बार बाहर घलो जाए मौका मिली जेमें मैं थाईलैंड गए रहे हाँ और वहाँ देखें कि समुदाय सरकार के व्यक्ति ठेकेदार और कुछ NGO के लोग जे हाँ एक साथ मिल के वहाँ के पानी बचाए पर काम करा थे। इंडोनेशिया भी गए रहे हैं हाँ
जेमे देखें कि हमारे यहाँ तो एफआरए कानून बने हैं, जेमे जब सरकार के सील लगी तब ग्राम सभा वो जंगल राखी, मगर वहाँ देखें कि कोई वहाँ एफआरए कानून वन अधिकार कानून लागू नहीं है, फिर भी ग्राम सभा पर्यावरण ला बचाए बर वो वहाँ के जंगल ला रखा थे। हमार मन के स्वार्थ है कि हमन ला वन उपज मिलते भरपूर, तब हमन जंगल के रख रखाव करते, मगर वहाँ ऐसे कोई वन उपज नहीं है, लेकिन वहाँ के समुदाय के लोग हैं वहाँ के जंगल बचाते। इतना कह के मैं अपन बात ला विराम देती। अपन बोली अपन भाखम अपन विचार रखे बर बोले रहे तो विचार के अनवरत आना भी जरूरी रही से, तो जोरदार तालियां एक बर। और अगला विचार पर मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं जो विचार हैं वो अपने आप में इतने अद्भुत है कि आप अगर अपने स्थान पर भी बोलेंगे सर तो मुझे लगता है कि सारे लोग उसे सुन पाएंगे। तो मैं बिना विलंब किए पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने विचार रखें। और हमारे अतिथिगण आपको सुन रहे हैं। जल संरक्षण पर भारत सरकार ने भी आपकी ख्याति को माना और आप ख्याति प्राप्त हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्थान के राजसमंद जिले से आता हूँ। एक ऐसा गांव है जहाँ पर बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं और खुशियाँ मनाई जाती है, आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने। उस गांव में विश्व का सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर का खनन कार्य होता है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं उस गांव से आता हूँ। मैं लगभग 35 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष इकाई, और प्रदेश में मैंने ओम जी माथुर के साथ काम किया है, वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे। 2005 में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच बनने के बाद मैंने तय किया कि मैं गांव में बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों के आधारित काम करूंगा। जो पानी मेरे गांव में 700 फीट नीचे था या ज़मीन सूख चुकी थी, वहां पर आज ज़मीन में जल में स्रोत बहते हैं, पानी ज़मीनी स्तर पर बहता है। वहाँ पर लगभग 30 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं और उसमें लाखों लाखों चंदन के पौधे हैं। उस गांव में जो लिंगानुपात 48% होता था, आज 52% है। आज वहाँ पर किसान के कुएं में पानी है, किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है, घर में हर घर में दूध है, हर घर में बेटी है और हर बेटी शिक्षित है। और ये सब काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना से हुआ है। मैंने एक प्रतिज्ञा ली जब मैं गांव का सरपंच बना, तो मैंने तय किया कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। और जहाँ पर अच्छे काम जो सरपंच कर रहे हैं, जैसे मैं पोपटराव पवार जी के गांव में गया सरपंच बनते ही, उनको देखा। मैंने अन्ना जी के गांव में गया और देश के जहाँ जहाँ अच्छे काम हो रहे थे वहाँ जाकर देखा। और आज पूरे देश के सरपंच मेरे गांव में आते हैं। मेरे गांव में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर एक्सीएन एससी रैंक के अधिकारी ट्रेनिंग देते हैं और छत्तीसगढ़ के भी सैकड़ों सरपंच वहाँ पर आते हैं। और मैं सरपंच क्या कर सकता है, सरपंच सीसी सड़क, सामुदायिक भवन और सीमेंट कंक्रीट के कामों से बाहर निकलकर सरपंच ठेकेदार नहीं बने, इस पर काम कर रहा हूं। और सरपंचों को समग्र ग्राम विकास को लेकर काम सिखा रहा हूं और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा हूं। और इसी क्रम में मुझे आज यहाँ की लोकप्रिय और बहुत ऊर्जावान कलेक्टर ने आपसे मिलने का और आप सब लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सरपंच ने दूसरे सरपंच के लिए रास्ता खोला, आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, पुनः आप सभी का धन्यवाद। अगला जो वक्तव्य है वो उनका है जो कि डेनमार्क से हमारे बीच अपना विचार रखने आए हैं, श्री हंस एनग्रोव जी। और आपको भी हमने अपने धमतरी में इनवाइट किया है, तो आपके विचार को भी हम सुनना चाहेंगे। श्री हंस एनग्रोव जी। Thank you very much. So it's an honor to meet you. I come from Northern Europe, Denmark. We're not bigger than a suburb to Delhi, I must admit. We have a saying in Denmark, it's India's moment. After coming here, I also realized it is Chhattisgarh's moment. And actually, between the government of India and government of Denmark, we have a green strategic partnership because we want to work together with India, the states, the different states and different agencies. So we are I'm very happy to be here, and I'm also looking forward to join the journey of India and in particular Chhattisgarh on the journey about better water management. Thank you. Thank you, sir, to sharing your thoughts.
और अब बारी है उन्हें सम्मानित करने की जिन्होंने इस जल सत्याग्रह में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। दृढ़ता और संकल्प के प्रतीक बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव कंडील नहर सत्याग्रह के सूत्रधार रहे। बाबू साहब का जन्म 28 फरवरी 1889 में एक संपन्न परिवार में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले के संपर्क में आकर आपने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। सन 1915 में धमतरी में श्रीवास्तव पुस्तकालय की आपने स्थापना की और आपके प्रपौत्र श्री यतीश भूषण श्रीवास्तव को हम यहाँ सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। कंडील सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह की शुरुआत का एक अंकुर है, एक ज्योत जो जली छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह की, वो यहीं से जली थी। और हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण की दिशा में प्रारंभ होने वाला संभवतः यह पहला सत्याग्रह है जिसकी शुरुआत यहाँ से रखी गई। जोरदार तालियां श्री यतीश भूषण श्रीवास्तव जी का सम्मान यहाँ हो रहा है, जो कि प्रपौत्र है श्री छोटेलाल श्रीवास्तव जी के। आप सभी ने कंडील नहर सत्याग्रह की बात सुनी होगी और इस अवदान को रेखांकित करते हुए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के प्रपौत्र को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। माननीय अतिथिगण उनका सम्मान कर रहे हैं और अगले सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री तरुण प्रजापति, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कुम्हार समाज। वन सत्याग्रह शहीद मिंधु कुमार सन 1912 में जन्मे जिला धमतरी के ग्राम लमकेनी निवासी शहीद मिंधु कुमार महज 18 साल की उम्र में वन कानूनों को सांकेतिक बंधन तोड़कर रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए आगे बढ़े। जल सत्याग्रह को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले उनके अवदान को रेखांकित करते हुए कुम्हार समाज धमतरी को सम्मान के लिए अग्रेषित किया जाता है। श्री तरुण प्रजापति जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनके सम्मान के लिए। श्री दिनेश्वर कुंभकर जी, अध्यक्ष धमतरी जिला कुम्हार समाज। अगला नाम है श्री गगन कुंभकर जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को धमतरी जिले में जल सत्याग्रह के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। उनके प्रपौत्र श्री आशीष शर्मा जी को सम्मानित करने के लिए मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करती हूँ। श्री अमित कुमार जी, सदस्य नरहरा जलप्रपात। कहाँ पे कराओगे सम्मान नहीं की सर, नीचे के ऊपर ही आ जाए सर, तो पार्टी ऊपर तक नहीं कहाँ तक नरहरा हो गया। श्री माधव सिंह, सदस्य इको टूरिज्म जरबरा हिलर्स जरबरा। श्री जसवंत सिंह, सदस्य संयुक्त वन प्रबंधन समिति गंगरेल। आप सभी को हम सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। जरबरा इको ग्राम समिति नगरी आदिवासी यूथ बच्चे जिन्होंने अपने गांव को इको टूरिज्म में विकसित किया, उन्हें सम्मानित करते हुए हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिले का एकमात्र वाटरफॉल नरहरा नगरी उक्त समिति को प्रबंधन एवं संचालन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। गंगरेल पर्यटन समिति को प्रबंधन और बेहतर टूरिज्म के लिए सम्मानित किया जा रहा है। प्रत्येक ने 30-30 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। ये ही उपलब्धि अपने आप में अद्भुत है।